हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और मैं स्लर करना शुरू हो गया हूँ ऑलरेडी अपनी स्पीच को। डॉन्टिंग होता है इतने बड़ी शख्सियत के साथ बात करना। इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर बिकॉज आईएमएफ ने कहा था कि 25 लीडिंग इकोनॉमिस्ट जो ग्लोबल वर्ल्ड को शेप करेंगे उनमें से एक हैं, प्रोफेसर हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पे, सर्प सेंटर ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च पाकिस्तान के को फाउंडर हैं और बेस्ट सेलिंग बुक हाउस ऑफ डेट के भी को ऑथर हैं। आतिफ मियां सर, कैसे हैं आप? थैंक यू शहजाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन। कोशिश करेंगे जितना भी आपके पास वक्त है उसमें आज हम पाकिस्तान की इकोनॉमी फिक्स करके ही उठें। जो मसले हाँ, मसाइल हमें पता है वो तो हमें पता है, आपकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हैं। इतना तो हमें पता है हाँ। क्रॉनिक हमारा और बैलेंस। रिमेनिंग टाइम में बाकी क्रिकेट पे बात कर लेंगे। नहीं नहीं, अभी हम 106 फॉर 7 है। तो मैं तो आई नो, ग्लैड हूँ आई कि स्टॉप्ड आपने वॉचिंग जब 5 आउट हुए थे। मैंने कहा देयर वी गो अगेन है। नहीं नहीं, आपने अच्छा हुआ। पहले मैं सोच रहा था कि आपने T20 के टाइम में टाइम दे दिया, फिर मैंने स्कोर देखा तो आई एम ग्लैड कि हम इस टाइम ये पॉडकास्ट मुझे कर पहले रहे ही हैं। पता था, तो मैंने कहा कि चले कुछ और कर लेते हैं उस टाइम में। तो सर हमें पता है क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हमारा है। आई थिंक फिगर ये है कि फॉर एवरी 1 रुपी वी अर्न, आपने कहा था 2.75 हम खर्च करते हैं, तो ये तो हमें पता है। ये भी हमें पता है कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है। बट कैसे? और कैसे कैसे इसको हम फिक्स करें? आप जिसको कहते हैं कि हमें एक प्रोडक्शन स्टैग्नेशन प्रॉब्लम है, हमें प्रोडक्टिविटी का मसला है, तो इस चीज को हम कैसे फिक्स करें सर? आई ऑलवेज बिलीव कि जो जिसे कहते हैं ना सोक्रेटिक मेथड, कि जिसमें आप आंसर कभी नहीं देते हैं, आप सवाल पूछते हैं टू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आई थिंक पहली बात तो ये कि जब तक हम जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, ये पहले कहना बहुत आसान है कि सोल्यूशन ये है, ये जाके लगा दो, ये कर दो और ये हो जाएगा। सो एक तो ये है कि वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट, बट वी शुड think about the process that we need to adopt and identify the root of the problem, the fundamentals, so to speak. So if it's okay with you, तो let's start from there. टू सी के यार के पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या है, कोर challenges क्या हैं, different ways of looking at that, but one of those ways is to um, make the following observation, which is that Pakistan, it's not that Pakistan is a poor country. The problem is Pakistan is not your typical poor country. Pakistan is a Pakistan poor is not, country with a lot of rich people. yeah, it's not your average poor country in a very statistical sense. मैं कोई वो political statement नहीं pass कर रहा. Statistically, you can see it. कि Pakistan is not a normal poor country. It's not the average poor country. So let me explain a little bit in what ways Pakistan is abnormal, so to speak. Or not the average poor country. And it's actually quite stark. So, one statistic which I really care a lot about is under 5 mortality. और अगर आप पाकिस्तान के अंडर 5 mortality के रेट चेक करें, obviously the poorer the country is, the higher the mortality rate is. But what is really remarkable in a negative sense for Pakistan is कि ये नहीं कि अंडर 5 mortality higher है, but it is systematically higher even once you condition on income per capita of the average Pakistani. To be more precise, every year about 115,000 under 5 children die that should not have died given Pakistan's income per capita. Right? So मैं बांग्लादेश और इंडिया से कंपेयर कर रहा हूँ. Look at, just imagine the magnitude of that. अगर आज मैं खबर छापूं अखबार में कि जी फॉर कोई सानिया हुआ है एंड 100,000 kids have died, तो दुनिया हिल जाएगी. But because it happens every minute, every day, in every village, हम उसकी बात नहीं करते हैं. But this is the extent to which things are weird. Right? यही मैंने बात की ना कि it's not कि we are poor. We are poor in a very different way. We are not poor like Bangladesh and so on. The same thing अगर आप लिटरेसी की बात करें तो it's not just कि लिटरेसी लो है पाकिस्तान में. About 17 million more people are illiterate in Pakistan relative to what should have been if Pakistan was an average poor country. Similarly, आप खवातीन का अगर आप कहें कि यार हम उनको किस तरह से हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर जो है एब्जॉर्ब किया है, अगेन
यस पुअरर कंट्रीज में इश्यूज होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट अबाउट 16-17 मिलियन, ये तो पूरे पूरे मुल्क की पॉपुलेशन इतनी होती है, विमेन जो हैं वो वर्कफोर्स में नहीं है, हु शुड हैव बीन देयर अगर हम एक नॉर्मल पुअर कंट्री होते, अगर हम एक एवरेज पुअर कंट्री होते। एंड देन यू कैन ऑल्सो लुक एट इन्वेस्टमेंट रेट। हमारा इन्वेस्टमेंट रेट रफली आधा है जो कि होना चाहिए इस लेवल ऑफ डेवलपमेंट में। द सेम इज ट्रू कि हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, वो तकरीबन आधी हैं जो कि रिलेटिव टू होनी चाहिए। ऑलराइट, क्या पिक्चर आपके जहन में बनती है व्हेन यू हियर अबाउट ऑल ऑफ दोस स्टैटिस्टिक्स? पाकिस्तान की बनती है क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूँ, तो आई आप आई यहाँ रियली रहते हैं, नो। राइट? लेकिन फ्रॉम द आउटसाइड अगर आप इसको एक सिस्टम लेवल आप इस चीज को देखें ना कि कोई ये चीजें रैंडमली नहीं हुई हैं, ये एक रिजल्ट है एक सिस्टम का। एंड आई थिंक ये एक बहुत जरूरी चीज है टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये कोई ऐसे नहीं कि ये कोई रैंडमली हम अनलकी हुए हैं और ये चीज बन गई है, ये सोसाइटी बन गई है, हमने इसको बनाया है सिस्टमैटिकली। और जब तक आप उन उस चीज को नहीं समझेंगे तो आप हवाई फायर ही करते रहेंगे कि अच्छा जी आज हम एक्सचेंज रेट कंट्रोल करके देख लेते हैं, कल हम किसी से कर्जा लेके देख लेते हैं, सो नहीं। ये इन 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 रूट कॉजेज को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आगे चीज जो है वो मूव नहीं करेगी इन द राइट डायरेक्शन। ब्रॉडर पिक्चर क्या नजर आती है? ब्रॉडर पिक्चर एक नजर आती है कि पाकिस्तान जो है इसकी एक बहुत ही एक स्क्यूड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, एक अनइक्वल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, नंबर वन। लेकिन मसला सिर्फ वो नहीं है, देयर इज अ सेकंड प्रॉब्लम, और वो है कि जो विनर्स हैं पाकिस्तानी ग्रोथ प्रोसेस के, आप उनको एलीट कह लें, इट्स अ पोलिटिकली चार्ज वर्ड, लेकिन चलें, वी ऑल नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हर मुल्क में एलीट होते हैं, और पाकिस्तान, इंडिया की भी अपनी एक एलीट है, कोरिया की भी अपनी एक एलीट है, जापान की भी अपनी एक, चाइना की अपनी एक एलीट है। और हर मुल्क की एलीट जो है वो अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करती है, और हर मुल्क की एलीट जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करती है अपने हक में। ये चीजें कॉमन होती हैं अक्रॉस, लोग हर जगह एक जैसे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की एलीट के साथ एक दूसरा मसला भी है कि पाकिस्तान की जो एलीट है वो दैट इट इज स्पेशली अनप्रोडक्टिव एंड हेंस पर्निशियस फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, कि वो जो चाइना की एलीट है वो स्टेट से लेती है सस्ता कर्जा और चीजें, या स्टेट के साथ, वो स्टेट ही है एक्चुअली, एक तरह से उसी के अंदर है। लेकिन उसने कंपटीशन किया एक्सपोर्ट मार्केट में, उसने कहा जी हम जो हैं वो हाई टेक में जाएंगे, हम जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे एंड सो ऑन। तो पैसा बहुत बनाया उन्होंने, वो बहुत ज्यादा अमीर हुए, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ी चाइना में। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि देयर प्रोसेस ऑफ अर्निंग वाज प्रोडक्टिव इन नेचर एज अपोज टू जो पाकिस्तान की जो एलीट है, उसमें अगर आप देखेंगे यार कहाँ पाकिस्तान के कौन है बड़े बड़े अमीर, आपको तो उन सब के नाम पता होंगे, आप वो लेना शुरू करें कोई पॉडकास्ट बंद हो जाएगी अगर मैं शुरू है, कर दूं। तो वो कहाँ से पैसा बनाते हैं? वो जमीन यहाँ से ली, जी। उसको हाउसिंग स्कीम बनाई, उसको उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें दो मेन चीजें, जस्ट टू फोकस ऑन दैट एंड देन विल मूव ऑन, आप शुगर की भी बात कर सकते हैं और चीजों की बात कर सकते हैं, मैनी डिफरेंट। बट इसके अगर नहीं यार पैसा बनता कैसे है रियल एस्टेट में, कभी सोच उसकी तरह नीचे जाते हैं ना, मैंने कहा कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है। जो बड़ा पैसा बनता है रियल एस्टेट में वो दो तरीकों से बनता है, उसकी दो सोर्सेज हैं फंडामेंटली। एक ये है कि आपने अपने गवर्नमेंट से कनेक्शन यूज किए और आपने लैंड को कन्वर्ट कर लिया पब्लिक से प्राइवेट हैंड्स में, एंड देन विद इन प्राइवेट हैंड्स उसकी जोनिंग आपने बदल दी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ये वो। उस सारी में वो नेटवर्क है, उसमें आपने वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेंट सीकिंग है, कि वो मैं और आप तो ऐसे जाके नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ मार्केट बेस्ड सिस्टम वो। एक तो वो है वैल्यू गेन करने का। लेकिन अगर उसके भी हम नीचे जाएंगे, ये असल में ये वैल्यू आती कहाँ से है? वो जो रियल लॉस है ना, क्योंकि जो वो वैल्यू तो फिर भी गेन हो रही है, वैल्यू गेन क्यों हो रही है जब आप उसको एक अर्बन प्रॉपर्टी बनाते हैं सो ऑन? वो असल में गेन उस तरह से आ रहा है कि उस अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव होते हैं। दोज आर द वंस हु आर रियली वर्किंग हार्ड, वो प्रोफेशनल क्लास है, वो ट्रेडर क्लास है, मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस समथिंग, कुछ तो वैल्यू ऐड करते हैं ना पाकिस्तान में अल्टीमेटली। और वो शहरों में ज्यादा होती है, एवरीवेयर इज द केस, रूरल एरियाज एंड सो ऑन। सो जो लैंड की वैल्यू है इट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिव ऑफ अदर पीपल्स प्रोडक्टिव
कैपेसिटी। अब इसीलिए जो है वो, अगर मैं सैन फ्रांसिस्को में जाके एक प्लॉट खरीदने की कोशिश करूंगा तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। उसमें प्लॉट ओनर का कोई कमाल नहीं है, उसमें असल कमाल उस सारे टेक इकोसिस्टम का है जो उस लैंड के अराउंड है। राइट, सो दिस इज द नेचर ऑफ लैंड वैल्यू, कि वो आती असल में अदर पीपल्स एफर्ट से है, और हम उनकी एफर्ट का जो वैल्यू है वो हम हैंड ओवर कर देते हैं टू मलिक रियाज ऑफ द वर्ल्ड। चले एक नाम मैं ले लेता हूँ। बट एंड एंड दैट्स अ ट्रेजेडी। तो आप एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर देखें ना, आपने सोसाइटी के अंदर क्या प्रमोट किया है कि काम कोई और करे और फल कोई और खाए। असल में ये हो रहा है। सो दिस इज वाई जब हम बात करते हैं, जस्ट वांटेड टू डिग इनटू द वो जिसे कहते हैं हम माइक्रो फाउंडेशंस ऑफ, ताकि थोड़ा सा हमें बेहतर समझ आए कि असल में मसला क्या है। जब मैं, हाँ प्लीज। शायद मसला इससे भी डीपर ही है कि हमारी जो एक इंट्रेंच्ड एलीट है, लॉट टाइम्स इकोनॉमिक साइलोज में प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, फिक्स रेट होना चाहिए। मोर एंड मोर आई फील लाइक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। आपने सैन फ्रांसिस्को से कंपेयर किया, बट यहाँ पे तो इस तरह का सीन है कि फाइलें स्पेक्यूलेटिव एसेट लैंड है, विच मे बी सैन फ्रान या न्यूयॉर्क में इतना ज़्यादा नहीं है। उसकी लैंड की एक वैल्यू है। यहाँ पर तो एक हाउसिंग स्कीम अनाउंस होती है कि जी गुजरांवाला में लगूना बनेगा, रिवर के ऊपर हम अब रावी रिवर के ऊपर हाउसिंग स्टडी बनाएंगे। अराउंड उसके देखिए कोई वैल्यू नहीं है, एक स्पेक्यूलेटिव एसेट शहजाद, बना के लेट मी उसकी पुश बैक ऑन फाइलें दैट। बांट कर मैं थोड़ा लोग पैसे पुश बैक कमाते हैं। करूं उसके ऊपर, जी मैं थोड़ा जी पुश जी, बैक करूंगा बिस्मिल्लाह उसके करें। ऊपर। मैं आई कंप्लीटली एग्री विद यू, लेकिन मैं एक तरह से उसके ऊपर पुश बैक, अगेन गोइंग बैक टू अनप्रोडक्टिव वर्सेस प्रोडक्टिव एलीट। देखें, आपने टेक का सैन फ्रांसिस्को की एग्जांपल दी, क्या सैन फ्रांसिस्को में स्पेकुलेशन नहीं होती? वो तो मास्टर्स हैं स्पेकुलेशन के। आई मीन गुजरांवाला में तो एक गोल्फ कोर्स वो फैंटेसी बना के वो एक हाउसिंग स्कीम चला लेंगे, या गुजरात में चला लेंगे। जो टेक जो फैंटेसाइज करता है, उसकी जो स्पेकुलेशन होती है, दैट इज ऑफ अ होली डिफरेंट लेवल। लेकिन प्रोडक्टिव। तो मैं ये बात, द पॉइंट, द ब्रॉडर पॉइंट, स्पेकुलेशन हर चीज में होगी। आपने, द क्वेश्चन इज कि आपने मार्केट कौन सी क्रिएट की है। जब आप, अगर आपने, सो द इशू इज नॉट स्पेकुलेशन और नॉट। अब ये नहीं कि आप स्पेकुलेशन को किल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगेन वो एक बड़ा नेचुरल सोसाइटी का प्रोसेस होता है टू स्पेकुलेट। भाई जब आप पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो स्पेकुलेट तो करेंगे, आधे ठीक होंगे आधे गलत होंगे। इसको आप नहीं रोक सकते, ना ही रोकना चाहिए। द इशू इज कि आपको स्पेकुलेट अच्छी चीजों पे करना चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। तो फाइलों और हाउसिंग स्कीम की स्पेकुलेशन से निकालना पड़ेगा, और हमें स्पेकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी कंपनी है पाकिस्तान की जिसके ऊपर हम बेट करें। इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि हम उस चीज को चेंज करते हैं, और नई स्पेकुलेशन, जो नई फाइलें ट्रेड होना शुरू हो जाती हैं, वो स्टॉक्स हैं पाकिस्तानी आईटी स्टार्टअप्स के। और कोई कहता है जी शहजाद के पास ये आइडिया है, ये ही इज द नेक्स्ट जेफ बेजोस ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर पैसा लगाओ। कोई और कहता है किसी और के ऊपर पैसा लगाओ। इमेजिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कभी आपको पैसा मिल जाए करेगा, यू विल ट्राई टू डू समथिंग, आधे फेल होंगे लेकिन आधे कुछ ना कुछ आगे भी तो निकलेंगे ना। दिस इज वॉट वी नीड टू चेंज। सो जस्ट टू पुश दिस फॉरवर्ड, आई थिंक दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक अबाउट ब्रिंगिंग चेंज इन पाकिस्तान। तो अब इसको हम कैसे लाएं? लेट्स जस्ट टू गिव, इसीलिए मैं बड़े इश्यूज पे वो फिर इट बिकम्स टू एब्स्ट्रैक्ट। सो इट्स हम्म। गुड कि वी आर नाउ फोकसिंग ऑन जस्ट एक, हम भी अच्छा इसको कैसे करें। हाउ डू वी मेक कि यार हम शहजाद की फाइल्स ट्रेड हो एज अपोज टू डीएचए की फाइल्स ट्रेड हो। राइट, ये इसको अपने अगर सिस्टम को चेंज करना है, वन वेरी इजी इंटरवेंशन इज कि यार आप लैंड के ऊपर टैक्स लगा दें। अब उसमें अब ऑब्वियसली अब वो फाइल इतनी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। और लेट्स गेट डिग लिटिल डीपर। अब आप कर क्या रहे हैं? असल में मसला ये नहीं है कि मैं रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश, इवन दो ऑब्वियसली वो जनरेट तो होएगा, दैट इज एन एडिशनल प्लस, और पाकिस्तान को बहुत चाहिए पब्लिक सेक्टर में रेवेन्यू जनरेशन। लेकिन उसको भूल जाए एक सेकंड के लिए। यहां पे जो टैक्सेशन का मकसद है, दैट इज प्योरली to incentivize the society to do the right, to speculate on the right thing. Speculation per se बुरी चीज नहीं है, बट स्पेकुलेट अच्छी चीज के ऊपर करें जिसका सबको फायदा भी हो। सो इन फैक्ट जस्ट टू, अगर इफ पीपल ओवर वैल्यू शहजाद, और वो जो चीज शुरू करना चाह रहा है वो 1 मिलियन की होनी चाहिए, लेकिन पीपल वैल्यू यू एट 1 बिलियन, सो दे आर
1,000 times overvaluing you, that is great for you. That just means you're getting very cheap money from the outside world. और जब तक उनको पता चलेगा million, you would have done the thing you wanted to do. ठीक है ना? So there's nothing wrong with it. There's a winners and losers. ये तो होता है. लेकिन जब आप लैंड, एक तो आपको ये होगा कि लोग आप कहेंगे अच्छा यार, लेट्स लुक फॉर इन्वेस्ट इन राइट सेक्टर्स जहां से कुछ ग्रोथ आएगी ऑफ कैश फ्लोज, रादर देन के लैंड को वैल्यूएशन के गेन्स पे मैं सिर्फ गेम खेलूंगा, बिकॉज वो वैल्यूएशन गेन तो मेरा टैक्स हो जाएगा. So you've shifted the dynamics just by doing that. The other thing is कि taxation, अगर मैं आपकी तनख्वाह को टैक्स करूं heavily, तो you have less incentive to work. So that taxation is inefficient. लेकिन going back to जो हमने पहले बात की थी कि जो लैंड की वैल्यू है अगर वो बढ़ती है, उसमें शहजाद का तो कोई कमाल नहीं है. उसमें तो बाकी लोगों का कमाल है जो शहजाद के लैंड के अराउंड मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. तो मुझे तो टैक्स करना चाहिए शहजाद के लैंड को. तो वो मैंने एक जो एग्जिस्टिंग इनएफिशिएंसी थी बिकॉज ऑफ हाउ लैंड वैल्यू वर्क्स, मैंने उसको एक्चुअली खत्म कर दिया है बाय टैक्सिंग इट. So as opposed to tax being inefficient, here I've actually increased the efficiency of the economy by introducing this tax. So this is just one example कि हमें holistically consider करना चाहिए जो system की dynamics हैं, and then solutions. अगर आप इस Socratic method से इकोनॉमी को एनालाइज करें तो सोल्यूशन इतना ऑब्वियस होगा कि किसी को बताने की भी जरूरत नहीं होगी. सर सोल्यूशन तो उनके पास भी है, लेकिन मुफ्ता इस्माइल ने नॉन यूटिलाइजेशन टैक्स 1% सिर्फ लगाने की कोशिश की थी, वो भी नॉट 1% ऑफ द टोटल वैल्यू. उस पर इतना पुशबैक आया. हम इकोनॉमिकली तो अच्छी बातें करते हैं, बट द सिंपल फैक्ट इज के जिन एलीट का फायदा स्टेटस को से होता है, उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो अपने फायदे के अगेंस्ट वोट करेंगे मुश्किल है. एंड आई नो यू डोंट लाइक गेटिंग पॉलिटिकल, बट आप जब पुशबैक करते हैं कभी कभी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर या मिलिट्री के खर्चे पे ज्यादा बातें होती हैं, जबकि वो इतना बड़ा मसला नहीं है. बट आपकी जो सेंट्रल थीसिस भी है अबाउट रियल एस्टेट, पाकिस्तान में नहीं, फैक्ट ऑफ द मैंने मैटर. ये कभी नहीं कहा, बाय द वे, जस्ट जी. टू बी ऑन द रिकॉर्ड, मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो एक्सपेंडिचर ज्यादा मसला नहीं है. माय पॉइंट ऑलवेज इज कि यार आप इसको इतना प्रॉब्लम को सिंपल ना कर देंगे. दिस गोज बैक टू द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड कि अनलेस यू गो टू द रूट ऑफ द इश्यूज, आप आज कह दें भाई गवर्नमेंट सॉरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर जितना भी है, whatever it is, I forget, X% of अलॉट. GDP, उसको आप आधा कर दें, and you say कि यार मैंने ये मसला सॉल्व कर दिया. My reaction to that is कि यार अगर आप इस तरह से simplistic solutions करेंगे तो you have no idea what you're doing. And अगर आप literally आज ये फैसला करेंगे, it will be a terrible फैसला, not because I believe कि military expenditure is the efficient point पर है, but कि यार इकोनॉमी का वो उस तरह से just by doing that you're not, because अदर बाकी सारी चीजें वही हैं, वही रियल एस्टेट के मसाइल हैं, वही रेंट सीकिंग है बाकी सेक्टर में, तो इससे को करके आप क्या कर लेंगे. बट वही ना सर, दीज आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में सबसे बड़ी रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन हमारी मिलिट्री है. या आपने मलिक रियाज का एग्जैक्टली नाम लिया, तो मलिक असल रियाज इशू, इज इन बेड विद दीज पीपल. हाँ, तो उसको बात करें ना, दैट इज तो व्हाट आई एम ट्राइंग उनसे टू. ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपने ही फायदों पर टैक्स करेंगे, ये तो अच्छा, होगा नहीं. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हाँ, अब लेट्स टॉक पॉलिटिक्स देन, नॉट इन द सेंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्वियसली, उसमें तो आप द अपने पॉलिटिकल बेटर इकोनॉमी. है, बट लेट्स टॉक अबाउट political transition. That's the question we are talking about. अच्छा, इसमें अब मसला ये होता है, और actually I talk, when I talk to different people, तो I sometimes tell them कि यार आप you can go after the 2 कनाल का प्लॉट, लेकिन आपने कभी इस बारे में सोचा कि जिन 2 कनाल के प्लॉट्स अब आप ले रहे हैं, मिलिट्री लेती है, बाकी लेते हैं, कि यार अब उस प्लॉट का फायदा क्या है जिसमें अब आपके अपने बच्चे नहीं रहेंगे. एंड दिस इज अ फैक्ट. आप जाके देख लें, डीएचए, गुलबर्ग, जो भी मेन मेन इलाके हैं शहरों के, एंड यू नॉक ऑन द डोर एंड यू आस्क द 60-70 year old पेरेंट्स, यार आप में से कितनों के बच्चे यहाँ पे असल में रह रहे हैं. माई पॉइंट इज कि देयर इज अ कलेक्टिव गेन दैट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, कि यार इसका कोई फायदा नहीं है, इस गेम का एक्चुअली अब कोई फायदा नहीं है. सो देयर नीड्स टू बी अ ब्रॉडर रियलाइजेशन कि यार अगर एलीट ही प्रोडक्टिव हो जाएं तो दे एक्चुअली हैव बिगर गेन्स नाउ देन द गेम्स दे हैव बीन प्लेइंग. सो पहली बात तो ये है कि एक्चुअली दैट लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन भी हमारे यहाँ प्रॉपरली नहीं हो रही है टू मेक देम रियलाइज कि यार आप
पिछले 25 साल में जो कुछ हुआ है, 25 साल इज अ यूजफुल टाइम फ्रेम बिकॉज इट्स अ जनरेशन। आज जो बच्चा पैदा हुआ है, 25 साल बाद वो जवान और मच्योर होके वो अपनी लाइफ शुरू करने के स्टेज पर होता है। 25 साल में द थिंग्स दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, another way of summarizing that is कि उन सब मिस्टेक्स का रिजल्ट ये हुआ है कि वो जो 25 साल का, जो आज का जो 25 साल है, वो जो भी कर रहा है ना, वो अगर लाख रुपया कमा रहा है, he or she would have been earning 2 लाख। वो ट्वाइस एज रिच होता अगर वो एवरेज पुअर कंट्री के रेट पे चलता, लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश। सो माय पॉइंट इज कि बाय ब्रिंगिंग अबाउट सर्टन चेंजेस वी कैन ऑल बेनिफिट, और अल्टीमेटली उन बेनिफिट्स का डिस्प्रोपोर्शनेट जो बेनिफिट है वो फिर भी एलीट को ही जाएगा, ऑन एवरेज एलीट को ही जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वो मलिक रियाज को ही जाएगा, लेकिन वो उसी कैटेगरी के लोगों में सबसे पहले जाएगा। अगेन ये लॉ ऑफ नेचर है सॉर्ट ऑफ, कि ऑब्वियसली दे होल्ड द resources for production, तो वो उन्हीं के पास अल्टीमेटली आएगा। So the broader point I'm trying to make here is that there is room for collective conversations on these issues, कि ये let's make the sum bigger than the parts right now, और उसमें सबका भला होगा including the current elite। इसको कई दफा कोजियन बार्गेनिंग की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल ट्रांजिशन। So we need to just raise awareness of some of those issues. Now, having said that, let me say one other thing, which is, you're absolutely right, yaar, karega kaun? You'll have to step on toes, who'll find these things uncomfortable and so on. And I think that's very much true, और ये हर मुल्क में होता है। For example, there is a reason कि it took the death of Mao and for Deng Xiaoping to come कि China change हुआ, उसके बगैर वो ना change होता। And what China is doing, perhaps अब जो उनका करंट लीडर है, she maybe he is not going to be that good because उसके अब जो इंटरेस्ट हैं वो और तरफ जा रहे हैं as opposed to what is their common economic interest. So जो लीडरशिप की विजन एंड करेज है, that is a factor that you can't run away from. And we have to sort of continue the political process for that purpose as well. कि perhaps they will recognize and realize, unfortunately we haven't seen it so far from the menu that has been available to us so far. But I think that's a huge opportunity that's been missed. Actually, I personally believe कि यार ये political leaders को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो लड़ते रहते हैं कि जी फलाने ने मेरी टांग खींच ली और फलाने ने मेरी टांग खींच ली, if they could only have half decent governance, nobody will be able to kick them out, at least from the current group of competitors that they have. But because their performance is so poor, कि it's an endogenous process, कि वो लोग जो हैं, जब मैं देखूंगा कि जी शहजाद जो है वो तो उसको गालियां पड़ रही हैं बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई या इन्फ्लेशन इज हाई, तो इट्स इजी फॉर मी टू टेक द चेयर फ्रॉम अंडर यू। बट गो अहेड। ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें बहुत क्लियर है कि पहले कौन आया। एंड आई फील यू वन अ लिटिल हार्श ऑन आवर सिविलियन गवर्नमेंट, जिसको आप नहीं, शॉर्ट आई टर्म। डिसएग्री, आई टोटली डिसएग्री, आई गिव यू एग्जांपल्स। नहीं, मैं देखें, सिविलियन गवर्नमेंट्स must bear the blame of not running themselves professionally to some extent. देखिए, I understand chicken and egg problem, and I don't know, I have a feeling that you are painting me as pro नहीं नहीं नहीं, military बिल्कुल or नहीं। whatever, यू टॉक but I अबाउट देम absolutely, इक्वली। आप कहते हैं हाँ, शॉर्ट टर्म मायोपिया ऑफ सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स, बोथ वो तो सिविलियन सबके ऊपर है, एंड लेकिन मिलिट्री। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इस बात पे वापस आऊंगा, just want to, because we have started with political, let's be fair to all parties, or unfair equally to all parties. One reason it becomes a name calling match between political parties versus military / establishment, and it's like, okay, take a side. One problem in my view is that they are all equally authoritarian. मसला ये है कि बस किसी का चलता है और किसी का नहीं चलता है. For example, when Bhutto attains power more than the usual civilian leadership, what does he do? He becomes autocratic. He goes against the basic kind of tenets of what
liberal democracy is, as you very well know. यहाँ भी जब नवाज शरीफ साहब when he went up to 2/3 and all of that, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की and so on, and then his wings had to be clipped. The point I'm trying to make is that power ultimately must belong somewhere. And the question is that when it goes to someone else, do they know what to do with it? So आप एक तरफ से power खींच तो लेंगे, but obviously it has to go somewhere else. And the question is, do they know what to do with it? And will they do the right things with it? So I think we need... Sir, Trump's term is not an argument against democracy in America. Similarly, नहीं, Bhutto's autocratic tendencies. नहीं सर, but देखे ना 10 साल ज़ियाउल हक थे, फिर मतलब 1.5 साल 2 साल 3 साल नवाज शरीफ बेनजीर की गवर्नमेंट्स आई, फिर 10 साल हमारी एक और मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, उसके बाद एक सिविलियन गवर्नमेंट आई जिस वॉर ऑन टेरर से डील कर रहे थे, फिर नवाज शरीफ जब आए, एक इमरान खान के 2 साल धरने थे, फिर उनको 2 साल एक केस चढ़े. इन दो सर्कमस्टांसेस फॉर देम टू एक्सपेक्ट, उनसे एक्सपेक्ट करना कि फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये करेंगे जब इनको ये नहीं पता 3 बजे तक इनकी गवर्नमेंट है या नहीं, और गवर्नमेंट कौन गिरा रहा है या कोशिश कर रहा है हमें पता है. आई थिंक इट्स ऑल्सो लिटिल अनफेयर ऑन देम. यस, ऑब्वियसली वो शॉर्ट टर्म देखेंगे, वो बोलेंगे अच्छा यार अभी फिक्स कर लो, अभी लोगों को फायदा दे दो, अभी पेट्रोल सस्ता कर दो. ये इंसेंटिव जिन्होंने बनाए हैं for the governments to act like this, I think they deserve a lot more criticism than those who are acting based on these incentives that have been created for them. I completely agree with you on that. So I don't think I'm disagreeing on that at all. In fact, one of the problems is कि चाहे आप इमरान खान की गवर्नमेंट को ही लेना जो मोस्ट रिसेंटली रिमूव हुई है, या उससे पहले नवाज शरीफ की क्वाजा रिमूव हुई बीच में एंड ऑल दैट, वो सारी पिछली गवर्नमेंट के साथ भी एक बार कि वो यू जैम द सिग्नल फॉर द इलेक्टोरेट कि उनको वो वो हर कोई जो है वो हाफ मार्टर बन जाता है. एंड सो we don't learn fully from the system as a result of that. Like, for example, Imran Khan government obviously was doing terribly. And they people would have seen that if they had completed their 5-year term, और वो इनको एक proper एक judgment day होता उनके लिए, जो कि अब वो सारा वो signal muddle हो गया, right, because of that. So I absolutely agree with that, but I will again say कि यार we need to ask more from our political parties precisely for this reason कि when अब आप देख लेना कि take the economic policy of PMLN. Do you know what that is? आपको पता है? Tell me if you know what it is. There has been no serious work done by, I mean, sorry, I'm just because they are in power, I'm taking their name, but the same is true about PTI. The same is true about People's Party. If you ask, yeah, ठीक है, I sympathize with them for all the reasons I do, I really do, and I understand that. लेकिन my question is कि what professionalism have they brought? In a relative sense, I understand. लेकिन कुछ तो improvement होना. What is the current economic policy of PMLN to take us to the next level? अब ये कह दें कि हम ये कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम विजन ही दे दो यार कि हम ये करेंगे. कुछ भी जो बेहतर चीज़ें हुई हैं वो इन्होंने ही की हैं. अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुआ, जो एहसास बना, ग्रेट थिंग. अभी जो नॉन यूटिलाइजेशन टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेट थिंग. जो आप पावर की बात कर रहे थे, समटाइम्स एटलीस्ट सिविलियन गवर्नमेंट्स को जुडिशरी उनके रास्ते में खड़ी होती है, मीडिया उनके रास्ते में खड़ी होती है. जब एक इदारा इतना बड़ा मॉन्स्टर है जिसके रास्ते में कोई नहीं खड़ा हो सकता, I think that is what we should be scared of. Maybe let's bringing this conversation back to the economy. Political instability कितनी वजह है पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना होने की. वन ऑफ द मेन रीजंस कि हम बोलते हैं जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही. लेकिन अगर टेररिज्म होगा, सिक्योरिटी रिस्क होंगे, तो फिर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? या गवर्नमेंट के साथ क्यों कोई गवर्नमेंट डील करेगी जब उनको ये नहीं पता दे विल बी इन पावर टुमारो or not? So, how much would you say the central reason for Pakistan not progressing economically is political instability? Of course, I mean you cannot deny that. Except that it's again it's another chicken and egg issue, right? So for example, let's go back to the fundamental sort of economic issues that we talked about early on. It's an unequal growth process. It's with unproductive elite. Now, one natural consequence of that unequal sort of growth process is that whenever there is an uptick in the economy,
because the nature of creation of sort of value added in the economy is unproductive. But demand to generate हो जाती है, जी but you don't have, and demand means आपने, there's more to import, आपने गाड़ियां ज़्यादा चलानी है, so on and so forth, but you don't have enough to sell to the rest of the world. So it always tends to push, because of this supply demand imbalance relative to the rest of the world. Growth upticks will all typically be associated with sort of this negative pressure on balance of payment, और वो एक्सचेंज, और वो पाकिस्तान के पिछले 50 साल से वो वही हो रहा है. That's why we are perennially into this cycle of IMF and so on. But this is economic instability, but obviously it translates into political instability as well, right? For natural reasons कि आप उसको politically जो है, it's easier for you to go after the government. So अब, and the two things obviously will feed into each other back and forth. अब अगर आपने इसको ठीक करना है, so you will again have to go towards the kind of economic reforms that, again we just gave one example of, कि उस तरफ हमें चलना चाहिए. But that's where we are failing. Just to give you your one example, again, that's why my criticism will be for political parties, not that we need to move away from political parties, but इसलिए because we need the political parties. It is for that. मैं मिलिट्री को क्रिटिसाइज करके मैं कितना क्या कर लूंगा भाई. मैं कह रहा हूँ कि चलो जिनके पास पावर है उनको स्ट्रेंथन करूं, मैं मिलिट्री को मैं क्यों एडवाइस दूं? यू सी माय पॉइंट? जी 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 अब आप, you just take the current example, I'm just using it as an example. I don't care about PTI or PMLN versus anyone else, but just because they are in power, just let's look at the one good thing that they were moving towards. जो आपने लैंड टैक्स की बात की, उस सिनेरियो में उस शख्स के साथ क्या हुआ और उसकी अपनी पार्टी ने क्या किया. अब आप मुझे ये बताएं, इसमें मिलिट्री का क्या कसूर है? यू सी द वेरी मिलिट्री के फर्स्ट. फेवरेट है मिफ्ता इस्माइल, बाय द वे, अंदर की खबर ये है। नहीं, वो जो भी मुझे नहीं पता, बट मैं तो सिर्फ एक बाहर से मैं बात कर रहा हूँ. जी जी मैं I'm just, this is why I say कि यार पॉलिटिकल पार्टीज कुछ तो करो भाई बिफोर यू स्टार्ट. भाई देखिए, the very first rule, political rule, when you are faced with a currency crisis of the sort that PMLN landed in, और वो भी खुद अपनी मर्जी से लैंड किया, ठीक है, it was their political decision. Now when you are in that situation, the very first thing is you have to completely back the person you have put in charge of handling with that situation. और when PMLN की अपनी जो पार्टी है, when they did not back their own finance minister, which was apparent, अब तो वो लीक्स भी आ गई and all that. देखिए, जब आपकी पार्टी ही आपको बैक नहीं कर रही, आपके फाइनेंस मिनिस्टर को, और वो कह रहे हैं जी ये टैक्स क्यों लगा दिया है, इसको वापस लो, one party leader is criticizing you for that and so on. भाई, what fiscal and financial credibility you think you can build by doing things like that? So this is what I'm talking about. Our political parties need to mature. बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये हमें भी सीखना चाहिए कि हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को गालियां ना दें कि ये चोर हैं, ये हैं. वी वी रियली नीड देम. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, बिकॉज और 200 मिलियन लोग एक दूसरे से कैसे बात करेंगे? द ओनली वे वी कैन कम्युनिकेट इज थ्रू दीज 2 or 3 पॉलिटिकल पार्टीज. इसमें बट भी ऐसे देन, या सॉरी, गो अहेड. वही इंसेंटिव्स, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस कर रही है, नाउ दे एक्सपेक्ट इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो इकॉनमी खराब होगी, लेकिन वो इंसेंटिवाइज लोगों को देने की कोशिश करेंगे. इसहाकदार वापस आ गए हैं. दारोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा जिक्र होता है. पीएमएलएन's रिटॉर्ट इज के अदर कंट्रीज मेक फिक्स एक्सचेंज रेट वर्क. पीपल से कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, वी कांट मेक फिक्स एक्सचेंज रेट वर्क. तो क्या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होना ही फंडामेंटली मसला है, या स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह इसहाकदार उसको चलाना चाहते हैं, नोइंग कि हमारे पास नहीं है डॉलर्स, दैट इज द प्रॉब्लम? देखिए, अगेन ये बहुत एक सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन है. द रियलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इज द फॉलोइंग. अगर आप पाकिस्तान, मैंने वही एक जनरेशन की बात की, अगर आप एक जनरेशन में ले ओवर द लास्ट 25 और सो ईयर्स, जो पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू थी, वो अगर $1 थी तो वो अब 25 सेंट रह गई है. राइट? सो इट्स 1/4 ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी. उसकी उसकी मेन लॉन्ग टर्म वजह क्या है? उसकी मेन लॉन्ग टर्म वजह इज, आपकी जो करेंसी है ना, लॉन्ग रन में वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी. क्योंकि वही वाली बात है कि आपने जो बाकी दुनिया से खरीदना है, अगर आप
आपको 100 लोग चाहिए टू प्रोड्यूस जो वहां की दुनिया का जो एक बंदा बना रहा है और आपके 100 बंदे बना रहे हैं, और पहले वो गैप 1 to 100 था, अब वो गैप 1 to 400 हो गया है, तो आपकी करेंसी ने तो वही रिफ्लेक्ट करना है ना, क्योंकि आप क्या आप बेच तो उसको ये 4 times लेस रहे हैं रिलेटिव टू जो आप आपसे खरीदना चाह रहे हैं. सो देयर आर दीज सिंपल, यू कैन नॉट डिफाई लॉज ऑफ नेचर. नो कंट्री कैन. अभी यूके इज लर्निंग द हार्ड वे कि दे कैन नॉट. So these are the fundamental issues. It's not about, so उस सेंस में आप फिक्स नहीं कर सकते हैं. Now I understand कि sometimes there are short term liquidity issues जिसे हम कहते हैं कि स्पेकुलेशन होती है, 5% इधर उधर शॉर्ट रन में आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसकी एक अलग साइंस है. लेकिन none of those issues are long term, have any relation to the long term chronic problems that Pakistan faces. तो उसको हम अपनी बैंडविड्थ जो है, सोशल बैंडविड्थ, हम उसी में जाया करते रहेंगे कि आज 2 रुपए ऊपर चला गया, 2 रुपए नीचे चला गया, वो तो फ्लक्चुएट करता रहेगा. लेकिन जो लॉन्ग रन टेंडेंसी है ना, रुपए की वर्सेस इंडियन रुपी वर्सेस बांग्लादेशी टाका वर्सेस यूएस डॉलर, वो एक आपका एक बेसिक रियलिटी चेक आपको एक दे रही है, विच इज कि आपकी जो इकोनॉमी है उसकी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज नॉट मैचिंग द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ऑफ योर कंपेटिटर्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. So that is the core issue. उसके ऊपर आप फोकस करें. And now again, this is the Socratic method. अगर आपको ये समझ आ जाती है कि this is the productivity growth, अब आप मुझे ये बताएं, आप फिक्स कर लें या फ्लोटिंग कर लें, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में उस पर क्या फर्क पड़ेगा? So we have to talk about other issues. अच्छा सर, उसी पे रिलेटेड फिर एक अगर मैं स्पेसिफिक आपसे इशू पे बात कर लूँ, आपने पहले नंबर्स दिए थे कि हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स है वो एक्चुअली इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन इंडिया ने जो किया है उन्होंने कुछ सेक्टर्स में स्पेशलाइजेशन करके, इंसेंटिवाइज करके उन सेक्टर्स में दुनिया में अपना नाम बना लिया कि कॉल सेंटर अगर आपने करना है तो ऑलमोस्ट जोक कि इंडिया में कोई आपका फ़ोन उठाएगा. डू इज इट ऑल्सो सुपरफिशियल टू से मे बी वी शुड स्पेशलाइज इन वन इंडस्ट्री, या ये बात की बातें हैं? नहीं, बात की बातें बिल्कुल नहीं है. दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन. मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को अगर रीफ्रेम या पैराफ्रेज करूं तो इसको ब्रॉडली आप, दिस इज क्वेश्चन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज वेल, कि यार ये डू यू नीड टू थिंक अबाउट इट, देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ prioritization and focus. The basic answer is absolutely. And it has to be worked through कि यार वो क्या prioritization है, क्या वो priority sectors हैं. क्योंकि गवर्नमेंट को resources and expectations coordinate करनी होती हैं of the private sector. Or that is part of what you're doing through it, call it industrial policy, which is a set of policy कि यार से कि यार इन चीजों में we think we can really grow fast, and now we are going to encourage the private sector to really go in, and we will provide kind of the guarantees कि यार ये जो है ये चीज अब इस डायरेक्शन में मूव करेगी, and we guarantee those rules of the game. So uncertainty कम होती है, expectations develop होती हैं, and then the private sector can really then leverage that and sort of build on that in a positive by building a positive cycle back and forth. वो क्या है पाकिस्तान के लिए, अगर आप उस तरफ उसको सोचना करें. I mentioned early on कि यार एक जो chronic problem है पाकिस्तान की वो balance of payment है. If you go to if you go deeper into it, the first most important variable would be energy dependence on fossil fuel. So a natural place to start would be energy for Pakistan. कि आप उसके around आप focus करें कि यार we need to turn away from fossil fuel, and we need to work on battery technology, renewables. Pakistan is one of the best places for solar. If you just combine solar with battery technology, you know that's an obvious sort of win-win. You solve your external imbalance problem, and obviously growth and everything else is energy dependent. So now you can dive deeper into the full value chain of how to build solar. I'm not talking about how to import solar. Anyone can do that with half a brain. But you have to build the value chain of that, ताकि वो जो value है उसकी वो मुल्क ही produce करे, मुल्क ही use करे, and then start exporting once you get to that level as well. So इसके लिए आपको क्या चीजें चाहिए? You have to work through that whole supply chain, and then उसके लिए आप उसको target करें, लोगों को incentive. So that's one way of how you would think about it. The other area in which you would focus would be the agriculture sector, because that is capital that is already there. उसमें historical know-how भी है, a large fraction of the population is touching it. So
उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो. हाउ डू यू बिल्ड दैट? उसके अंदर टेक्नोलॉजी को लाना है. दैट वैल्यू चेन हैज टू बी बिल्ट अप एज वेल. लेकिन इन सब काम करने के लिए एक फैक्टर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कि यू हैव टू बिल्ड टीम्स and delegate to those teams which are then led by competent people. ये एक बहुत बेसिक, आपने कोई भी काम करना हो ना, एवरीबडी नोज, आपने फर्म चलानी है, ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, यू नीड कॉम्पिटेंट मैनेजर्स. और उसके लिए फर्स्ट इशू इज कि यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंट पीपल एंड देन गिव देम रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी. इट्स अ वेरी बेसिक, आई वुड से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस. And I will again, मैं फिर political parties पे आऊंगा because I want them to pick these people. But what terrible jobs they have been doing on that. They really have to improve on that core issue of governance, which is selecting good people, which is not straightforward, by the way. अगर मैं आपको आज कहूँ कि यार कोई, I need some niche neurosurgeon because I'm facing some problems. भाई आप कैसे, आपको क्या पता कौन सही है कौन बुरा है? It's you actually need the whole HR का जो process होता है in general. Again, when you have to identify people, empower them, give them resources, these are the kind of things you need to do. I mean, just to give you one example, दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, but if you look behind कि असल में वो वहां तक पहुंचते कैसे हैं. China wanted to transition agriculture, उनका जो इनर मंगोलिया का एरिया, उसको उन्होंने वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था. They looked for people of Chinese descent and so on. एक बंदा उनको मिला जो Netherlands has some of the best universities agriculture के sector में. So they pick someone from there. Then they bring him into China and they say, okay, we will make you in charge. We'll give you all the resources. You'll use all that know-how to now develop Inner Mongolia, और यहाँ पे agriculture production शुरू करो and so on. This is how you work towards it. पाकिस्तान में ये मेंटालिटी नहीं है. हमारे पॉलिटिशियंस की मेंटालिटी ये है कि ये टर्न की बेसिस पे जिसे कहते हैं ना, वो कि यार आप कह दो, आप ही आके बसें बनाओगे, रोड्स बनाओगे, जब बन जाए तो हमें देना. एंड देन this is what we did with CPEC, for example. There was nothing wrong with going to China and saying, yeah, let's do some collaboration. But did Pakistan know कि किन sectors में हमें चाहिए, so the value added is inside Pakistan. As opposed to that, we will pay for the entire power project in dollars. उसके लिए हम fossil fuel import करेंगे from the outside, sell it to our local citizens. But how will you pay for it? All the dollars that you're accumulating. और अब वही हो रहा है उन्हीं IPP प्रोजेक्ट्स पे. अब लेटेस्ट न्यूज आप देख रहे होंगे कि जी वो जो उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स है वही नहीं पे कर सक रहे बैक टू चाइना. भाई इट वाज बिल्ट दैट वे. मैंने उस वक्त कहा था, आई एक्चुअली इवन ट्वीटेड ऑन दैट थिंग कि मैंने कहा यार दिस इज सो ऑब्वियस. अब ये जो थे प्रोग्राम्स अंडर सिविलियन गवर्नमेंट्स, अंडर मिलिट्री, दे वर ऑल बिहाइंड इट. But there was no one in that decision-making process. This bringing it back into this umbrella of industrial policy and so on. Yes, we need to do all that. लेकिन जब आप वो काम शुरू करेंगे ना, there is that decision-making process. उसके लिए you will have to have people who know what they are doing, who are able to understand the repercussions of their decisions. I think we really under sort of value or emphasize. We are too quick to go to corruption. We are too quick to go to military bad and so on. यार हमारा एक मसला है, it's just the very obvious one, which is you can call it competence, but another way of saying that is कि even when we are trying to, हमारी intentions भी ठीक है. CPEC में फॉर एग्जांपल मेरा नहीं ख्याल कि उसके 80 के लोगों ने शायद पैसे भी साइड पे कमाए हों, बट दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द कंट्री कि यार चलो किसी तरह से, बट दे डिड नॉट हैव अ गुड सेंस of the negative macro implications of the way they were doing it. I don't think there was that full realization. I think that's part of what is an issue here, which is the broader, you have to bring competent people in the decision-making process. This is what I'm trying to say. So they can raise red flags. ये आपका ही भला है. If you bring competent people, they will, this is again what I mean by political parties need to mature up a little bit. आई थिंक बिकॉज मैं पॉलिटिकल निगाह से देखता हूँ, इवन सीपैक मेरा भी यही इरादा है कि अगर आप एक
एक मुल्क के खत्ते को एज अ कॉलोनी रन कर रहे हैं। इवन गवादर में जो डेवलपमेंट हो रही है, गवादर के जो लोग हैं उनके पास पीने का पानी नहीं है। टू एक्सपेक्ट कि हम बाहर से लोग लाकर रोड्स बनाकर पूरी सिक्योरिटी उसको दे देंगे और एक लोकल एरिया में चीज बनाएंगे जिससे लोकल लोगों का कोई फायदा नहीं हो, वो आ भी नहीं सकते उसमें और वो चीज सक्सेस हो जाएगी, इज फूलिश। बट फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव आई थिंक वो समझ रहे थे कि यस वी विल पे अ प्राइस। ऑब्वियसली दे न्यू द नंबर्स कि हमें ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, बट देयर एक्सपेक्टेशन वाज कि सीपैक के बाद 6 और लोग आ जाएंगे, 7 और लोग आ जाएंगे। सो द मनी दैट विल मेक फ्रॉम दैट विल कॉम्पनसेट फॉर द लॉसेस दैट वी आर मेकिंग हियर, और वो एक इतना बड़ा इकोनॉमिक हब बन जाएगा कि हमारे प्रॉफिट से हम वो कर सकेंगे। बट वो कैसे बनेगा व्हेन यू हैव सिक्योरिटी इश्यूज एंड यू आर रनिंग बलूचिस्तान लाइक यू आर? Yeah, to be honest, you see, again, I'll go back to मेरा नहीं ख्याल, I think you're giving them too much credit. हु In the, पॉलिटिशियंस? कि उनका ये कि they thought this through कि यार नहीं वो नहीं बाद नहीं, में दिस कुछ दिस इज देयर डिक्लेयर्ड सीपैक फिलोसफी। नहीं, वो डिक्लेयर तो है, बट दे वाज बिकॉज जब ये सीपे की बात कर रहे थे ना, सो मैंने कहा यार ये प्लीज ये समझाओ कि ये क्या, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। आई रियली प्लीडेड कि यार कोई नंबर्स तो दो ना, कोई एनालिसिस तो किया होगा। they were words like that, but they were all marketing, वो वही है, वो गोल्फ कोर्स ही था गुजरांवाला में। Nobody had done any numbers कि यार वो under what set of assumptions वो वाला मल्टीप्लायर होगा। यू बेसिकली टेलिंग मी कि देयर एक्सपेक्टेशन वाज कि हम गवादर को दुबई बना लेंगे। यस। यही थी ना एक्सपेक्टेशन। तो बिल्कुल भाई कैसे बिल्कुल। दुबई बना लोगे? हैव यू, आप दुबई में क्या कुछ कर सकते हैं जाके? आप पाकिस्तान में वो सब कुछ कर सकते हैं? तो आप मतलब एक जो आपने प्रोफेशनल क्लास बिल्ड करनी है, जो एक करना है, उसके लिए एक सर्टन ओपननेस चाहिए होती है, ऑफ अ सर्टन काइंड। ऑब्वियसली दुबई में कोई पॉलिटिकल ओपननेस नहीं है। माय क्वेश्चन है, अगर आपने वही करना था तो कम से कम उसी को सोच लेते। उसकी उसके पैरामीटर्स ही रख लेते, फिर उसको प्लान का हिस्सा। नॉट दैट आई सपोर्ट दैट, नॉट एट ऑल, आई एम टोटली विद यू ऑन। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको भी नहीं थॉट थ्रू किया था। मैं दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप वही करना, मैं आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल्स। ट्रस्ट मी, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कंप्लीटली ब्रोकन। मैं इसीलिए बात करता हूँ, द नर्वस सिस्टम इज ब्रोकन। ये जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सक रहे। दिस इज द रियल कि यार अगर आप कहना कि यार इनकी नीयत खराब है, ये जो करना चाहते हैं ये उसमें भी अनसक्सेसफुल होते हैं। I'll give you मैं another example, just to, I'm and maybe just I'm coming off as a lawyer for these politicians. I'm really not. I criticize them for a lot. But would you also say कि सीपेक के टाइम में कहीं और से भी तो नहीं आ रही थी? So yes, हायर इंटरेस्ट रेट्स पे उनको वापस करना था, बट ऑप्शन भी तो नहीं था, कोई और तो पैसे दे नहीं रहा था, सुधार कहीं से करो। तो लेने थे। नहीं, ना ले। क्यों कहीं से लेने थे? ये क्या वो जबरदस्ती है? Nobody was देयर putting वाज a gun। एनर्जी क्राइसिस, भाई लोड that is शेडिंग। okay, let's come even now, the same issue is, let's talk about now. You're absolutely right, because I was having some conversations at that time with people, यार कहीं से नहीं आ रहे, तो हमें तो बोट्सवाना से भी हमारा बुरा हाल है, the things like that, people are making these kind of statements. Nothing, I mean, Botswana is actually much better than, but that's a separate story. um, the the more important question is कि भाई आपको कहीं जाने की जरूरत ही क्या है? अगर आपने रिफॉर्म्स करने हैं, स्टार्ट फ्रॉम विद इन। अगेन दिस गोज बैक टू द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ इकोनॉमीज वर्क। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, जो हम इतना नाम लेते हैं चाइना का, भाई चाइना ने कभी किसी से बोरो किया टू स्टार्ट इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस? In fact, the reality is that throughout its very high growth rate process, China never borrowed from the outside world. Net terms में not a single dime. In fact, it continued lending to the rest of the world while it was growing like crazy. Why? Because again, the simple math is कि growth is about domestic productivity growth. If you bring in the science, जो जिन लोगों ने वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लानी है, वो जहां जहां भी बैठे हैं, आप उनको ले आए, अपने मुल्क में बिठा लें। This is what you need to do to create those firms, to create those companies, public private partnerships and so on. That is that is hard work, Shahzad. This is the problem. 100%। मैं यही कह रहा हूं कि वो टर्न की बेसिस पे कर रहे हैं। This is the problem. This is how you build a country. You cannot build it by importing capital in that sense. वो भी सारा बना बनाया capital. ठीक है? So again, this will, but this is why I'm going back to that thing कि हमारी जो domestic policy makers हैं, which starts from political parties,
दे नीड टू फाइंड मैच्योरिटी, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से नहीं चलेगा काम. And that decision making process needs to be improved. मेरी मेरी तो कोई उम्मीद नहीं है इनसे. अगेन अभी राइट नाउ इलेक्शन मोड में आ गए हैं और इकोनॉमी तबाही करेंगे. इसमें आईएमएफ का भी काफी जिक्र आता है. एंड बूम बस्ट साइकिल हमें पता ही है कि पाकिस्तान की है. आईसीयू से कंपेयर किया जाता है कि हर 6 महीने में हम वापस वहां पर पहुंचे हुए होते हैं. बट फॉर पीपल हु डोंट लुक एट दीज थिंग्स एज क्लोजली एज यू, ए कैन वी डू समथिंग अबाउट आईएमएफ? बी आईएमएफ में जाना नेसेसरली बुरी चीज नहीं है. बट जिस तरह इंडिया भी गया था, उन्होंने वो पैसे लेकर फिर प्रोडक्टिव चीजें बनाई. एंड दे डोंट नीड टू गो द नेक्स्ट टाइम. सो इज आर प्रॉब्लम कि आईएमएफ जाना प्रॉब्लम नहीं है, बट आईएमएफ के जो पैसे आते हैं उसके साथ जो हम करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम. देखिए, इट्स इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू रियलाइज कि आईएमएफ है क्या चीज. यू सी आईएमएफ, आईएमएफ की जो असल जो उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि इट्स सपोज टू हेल्प कंट्रीज विद लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, नथिंग एल्स, दैट्स इट. लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्या होती है? लिक्विडिटी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई फॉर सम मार्केट ड्रिवन टेम्पररी रीजन, दैट्स द कोर थिंग टू अंडरस्टैंड, कि फॉर सम टेम्पररी रीजन अ कंट्री इज शॉर्ट ऑफ डॉलर्स. सो एक इंटरनेशनल लेंडर आके वो उसको शॉर्ट टर्म पे वो डॉलर्स दे दे, ताकि जो एक कुछ महीनों के लिए जो उनको मसला हो रहा है ऑफ मेकिंग देयर इंटरनेशनल पेमेंट्स, वो करके दे गो बैक ऑन देयर लॉन्ग रन ट्रेजेक्ट्री. पाकिस्तान का मसला इज, कोर प्रॉब्लम इज विद द लॉन्ग रन ट्रेजेक्ट्री. तो वो तो आईएमएफ एज एन इंस्टीट्यूशन, तो पहली बात तो ये वो क्रिएट ही नहीं हुआ था टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ के आने से या हमारा आईएमएफ के जाने से वो कोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो वो तो द सिस्टम इज नॉट इवन डिजाइन दैट वे कि वो आपको क्या करेगा. वो इसलिए वो सिर्फ अकाउंटिंग की कुछ बातें आपके साथ करेंगे. अच्छा भाई, फिजिकल डेफिसिट को इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो, बिकॉज ऑल दे आर इंटरेस्टेड इन कि यार अगर ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम है तो चलो जो शॉर्ट टर्म कैश स्क्वीज है वो हम किस तरह से पूरा करते हैं, एंड यू जस्ट बैलेंस योर बुक्स, और फिर जो आपकी नेचुरल ट्रेजेक्ट्री आप उसमें चले जाएंगे. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार अगर आप नहीं सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकते तो फिर आप महंगी बेचें अपने लोगों को. और वो आपको क्या कहेंगे? वो आपको सस्ती बिजली बनाने का तरीका तो नहीं सिखाएंगे ना. दिस इज माई पॉइंट. जस्ट टू गिव वन बिग इशू विद पाकिस्तान, ये सारा आईएमएफ और वो जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, जस्ट द रॉन्ग वर्ड. वो असल प्रॉब्लम क्या है? वो असल प्रॉब्लम है कि एवरी टाइम यू हैव हैड एनर्जी इशू, यू हैव ट्राइड टू इंपोर्ट द एंटायर एनर्जी मिक्स. आप कहते हैं हम किसी और से वो प्लांट खरीदेंगे, फिर हम तेल बाहर से मंगवाएंगे, और फिर हम अपने लोअर मिडिल क्लास को बेचेंगे. भाई कैसे बेचेंगे आप? द मैथ डज नॉट एड अप. फिर आप सब्सिडाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए सर्कुलर डेट क्रिएट होता है, फिर आप कभी उसकी मेहनत करते हैं, कभी किसी और की, बट द होल सिस्टम इज अनसस्टेनेबल. मैं इसलिए, दिस इज व्हाई आई गो बैक टू, यार ये किसी ने सोच के ये पहले सोचना चाहिए था कि यार ये वेयर आर वी हेडिंग विद दिस प्लान ऑफ फॉर एन एनर्जी पॉलिसी. आईएमएफ का काम नहीं है, उनके लोग ट्रेंड ही नहीं है, उनके पास पावर ही नहीं है एक्चुअली. अगर वो ये कहेंगे तो यहाँ और शोर मचेगा कि नहीं, कि ये कौन होते हैं जी बाहर से आके हमें बताने वाले हम कौन सा प्लांट चला सकते हैं, कौन सा नहीं चला सकते. सो ये चीजें हमने खुद करनी है, ये फैसले हमने खुद करने हैं, और फिर आपको आईएमएफ पे जाने की जरूरत नहीं होगी. एंड दैट इज द ओनली वे. अनदर वे टू से दिस इज कि हम कई दफा कहते हैं कि आईएमएफ कंडीशनैलिटीज एंड सो ऑन, एंड वी कैन आर्ग्यू अबाउट दैट. आई मीन दैट्स अ वेरी रीजनेबल कॉन्वर्सेशन. लेकिन आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए है वो ये है कि हम अपने ऊपर कौन सी कंडीशनैलिटीज लगाना चाहते हैं. भूल जाए आईएमएफ को. और इस वक्त हालात ये थे टू जस्ट टू कि पाकिस्तान, अगेन हकीकी आजादी और सारे वो नारे बड़े आसान होते हैं लगाने. पाकिस्तान की आजादी का ये हाल था कि अगर आईएमएफ थम्स डाउन देता, वो ग्लैडिएटर फिल्म में वो जिस तरह से होता है ना कि ये जिंदा रहेगा, वो किंग कहता है ये आईएमएफ के हाथ में था. यू आर दिस क्लोज टू बिकमिंग वर्स देन श्रीलंका, बिकॉज फिर तो श्रीलंका के पास तो आईएमएफ की ऑप्शन थी ना आगे. फिर भी अगर आईएमएफ कहता, एंड टेक्निकली दे कुड हैव, मैंने वही बात की, आईएमएफ अगर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन, कि आईएमएफ तो सिर्फ लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आईएमएफ कुड हैव कम एंड सेड यार आप लोगों का तो, आप तो परमानेंटली आप इन डिफॉल्ट है, तो हम नहीं दे सकते आपको, सॉरी. बाकी साहब ने कह दिया था आईएमएफ नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे. सो दिस इज हाउ, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है, अगेन टू दोज हु जो असल में पावर में है, कि यार ये कोई तरीका है मुल्क को इस हद तक ले जाने का.
कि आपकी इंटायर सॉवरेंटी एक्चुअली जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। तो वो तो हमें उनका शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने वो थम्स अप दे दिया, साइन, कि चलो कुछ महीने और ट्राई कर लो। बट आई थिंक इट्स रियली, आई डोंट थिंक पीपल, अभी तो डिटेल में हमने बात नहीं की, बट द सिचुएशन इज रियली रियली बैड। अगर वो रियलाइजेशन अभी भी नहीं आएगी तो ये एक्सचेंज रेट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे कुछ नहीं होगा। इंटरेस्टिंगली हम अपनी पॉलिटिक्स के लिए उनको जलील कर रहे हैं, बट डोनाल्ड लू आर्ग्यूड इन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प अस कि आईएमएफ का हमें मिलना चाहिए, डिस्पाइट हम उनके नाम के साथ जो भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम डिटेल में नहीं डिस्कस करें कि सिचुएशन कितनी बैड है, प्लीज बता दें हमें डिटेल में कितनी बैड है सिचुएशन। देखें, ओके, बट दिस ऑल्सो गोज बैक टू डिसीजन मेकिंग। जो मैं कह रहा था, हमारी डिसीजन मेकिंग इज रियली ब्रोकन। मैं पीपल आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, क्या कितने बुरे हालात हैं अभी। बिफोर दिस करंट गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट के आपको याद होगा, एक बहुत ही ह्यूज पॉम्प एंड शो के साथ एक नेशनल पॉलिसी बनी थी कि वो पाकिस्तान को एक नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए, उसके अंदर कुछ थिंक टैंक्स भी इन्वॉल्व थे इन इस्लामाबाद एंड सो ऑन। और ऑब्वियसली उसके अंदर अब अदर इश्यूज, उसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी का भी था। एंड इफ यू रीड इट एज एन इकोनॉमिस्ट एटलीस्ट, यू अगेन यार कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। there is absolutely no proper thinking behind it. I'll give you one example, क्योंकि वो मुझे आपकी इस बात से याद आया था कि जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसी का एक हिस्सा था कि जी हम अपनी रेमिटेंसेस को प्रमोट करेंगे। यार व्हाट अ, आई मीन, डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट जीडीपी स्टैंड्स फॉर? के ग्रोथ जो है, इट्स अबाउट वैल्यू एडेड दैट यू प्रोड्यूस इनसाइड पाकिस्तान। रेमिटेंसेस का क्या ताल्लुक है इससे? नंबर वन, मैं आई एम जस्ट एक सिंपल सिंपल चीजें, जब आप एक स्टेटमेंट, एक ऐसे नेशनल लेवल के जो आप कहते हैं जी बड़ी हमने सोचो विचार करके वी ऑल पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड दिस इज व्हाट वी केम अप विद, उसके अंदर जब आप इस तरह की बातें करेंगे, और ये आप, आई एम श्योर, एंड जो व्हाट लीडरशिप में आर बात दे करती है कि प्राउड ऑफ दैट? हमारी गवर्नमेंट ने ये किया कि रिमिटेंसेस बढ़ गई हैं जी, ये कमाल हमने किया। भाई इसमें आपका क्या कमाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड नंबर टू, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद ग्रोथ? एंड बट नंबर लेट 3, मी यू कम आर टू दैट, जो प्राउड आप, ऑफ एक्सपोर्टिंग योर टैलेंट, कि ये बाहर हाँ, जाएं, बाहर कमाएं, थोड़ी कौड़ियां हमें भेज दें वापस, हमें भी नहीं, गवर्नमेंट को भी नहीं, अपनी फैमिलीज को। somehow this हाँ। is a success for our government. You see, I just wanted to point that out again, to because I really want to make that point कि यार ये decision making जो process है, ये completely broken है ना। But that means जो आपका असल सवाल था कि how bad the situation is, one way to understand how bad the situation is exactly from that। यार इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के, मुझे दो सिनेरियोज नजर आ रहे हैं। एक इज अ गुड सिनेरियो, अगर चले वो तो नहीं होगा तो लाहौरी डायरेक्ट जुबान में बैड पे जैसे ही आ कहते हैं ना, अगर जाए। हम इंसान के बच्चे बन जाए, चले वो तो नहीं होगा, यानी तो बैड पे ही आ जाते तो हैं। बैड पे इट्स लुकिंग एट कि वही, अगर अपना वो अनबैलेंस्ड आपने ग्रोथ सिस्टम रखना है, so your sustainable path is कि you just continue to export your people, and that defines the ceiling of how much you can grow। जितने आप एक्सपोर्ट कर लेंगे उतना आपको डॉलर्स आ जाएंगे टू देन इम्पोर्ट द कंजम्पशन दैट यू वांट, बट उससे ज्यादा नहीं आप कर सकते, बिकॉज देन यूल रन इनटू बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट पाकिस्तान के लास्ट 20-25 ईयर। सो लेट मी गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स ऑन दैट। इस वक्त पाकिस्तान के, इफ यू लुक एट द remittance to export ratio, if you will, they're roughly 1-to-1। पाकिस्तान अगर $1 एक्सपोर्ट से कमाता है तो $1 रेमिटेंसेस से आता है। दैट सेम रेशियो, बाय द वे, for India is like 20 cents. That is to say, for every dollar of exports that they earn, they get about 20 cents of remittances. And more importantly, ये remittance to export has not risen at all. It's actually flat or falling. Similarly for Bangladesh, it's more, it's like 40-50 cents, but it's half of Pakistan. Pakistan may, not only is it one, but it's been growing like crazy because exports have been flat. And why am I pointing this out? I'm pointing this out that if you, exports are ultimately the reflection of कि आप दुनिया के मुकाबले में कितने प्रोडक्टिव हैं। इसीलिए मैं अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ऊपर जोर दे रहा था ऑल कि दैट्स काइंड ऑफ व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स। चूंकि हम कंप्लीटली फेल होते रहे हैं उसमें, our entire
incremental reliance has been कि यार और कहीं से आ जाएं. And in fact, what happens then is कि because आप grow नहीं कर रहे, there is more frustration, disillusionment, कि लोग भागना चाहते हैं. So the exodus is at a faster pace. और हम बहुत खुश हैं कि यार हमने तो अपनी नेशनल पॉलिसी में अब ये डाल दिया कि चलो जाओ और अपने लोगों को पैसे भेजो. और ऑब्वियसली वो एक जनरेशन बाद वो भी खत्म हो जाता है. सो यू नीड टू कीप सेंडिंग मोर एंड मोर, क्योंकि वो तो फिर फैमिली भी पूरी मूव कर जाती है ना अल्टीमेटली. दिस इज द अदर फोक जो हमारा नजारा. ये नहीं होता कि मुल्क रहेगा तो उधर ही होता है ना, मुल्क लोग भी उधर ही होते हैं. तो ये नहीं कि वो जब कहते हैं फेल्ड और व्हाटएवर, वो आई डोंट लाइक दोस टर्म्स बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है. दोस आर, वी शुड नॉट टॉक इन दोस टर्म्स. हमें ये है कि यार सिनेरियोज क्या अवेलेबल है हमारे पास. तो हमारे पास ये दो सिनेरियोज अवेलेबल है कि या तो वी गेट बैक ऑन द ट्रैक दैट वी आर सपोज टू. उसके लिए जो चीजें करने वाली हैं वो सम ऑफ देम वी हैव टच्ड, देयर आर ऑब्वियसली अदर्स. बट अगर हम वो नहीं करते हैं, देयर इज अ पाथ. कभी लोग ये ना समझे कि देयर इज अ पाथ. लेट्स जस्ट स्पेल आउट व्हाट दैट पाथ इज. मेरे ख्याल में वो पाथ यही रहेगा फिर. It's like countries like Haiti, that's what they are very highly remittance dependence. Productivity बहुत low होती है domestic, and you're just not fixing those issues. अब Pakistan, because it's a very large country, तो obviously वो it's able to send people in large numbers. वो एक networks ही बन चुके हैं, तो वो जाते रहते हैं and so on. But that's a very fragile system. एक तो पहली बात ये है कि वो system जब उसमें कभी high growth possible नहीं है obviously. वो जाके जेफ बेजोस बन के तो नहीं वो भेजेंगे ना बिलियन डॉलर. वो तो बन गए तो फिर वो वहीं चले जाएंगे. तो वो एक खास तबका सिर्फ है जो भेजता है, विच यू रिलाई ऑन उसकी. सो अगेन इट्स अबाउट डिसीजन. वही वाली बात है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने रेमिटेंसेस को किस तरह से व्यू करना है और उसको किस तरह से यूज करना है. ये वो सो दैट्स अनदर कन्वर्सेशन. आई कैन डू दैट, बट दैट वो टेक्निकल हो जाएगी कि व्हाट आर द मैक्रो प्रूडेंशियल ways of thinking about how to use these remittances properly. वो भी they have been used in a terrible way from a macro perspective. आई नो कि आपको लग रहा है कि मैं एल्गी को देख के इसमें इंटेलिजेंट डिजाइन ढूंढ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने सोचा होगा, सिर्फ पागलों की तरह लड़ नहीं रहे. बट इफ आई मे अज्यूम वन मोर इंटेलिजेंट डिजाइन इन इन दीज पीपल, आपको लगता है कि कुछ गोल्डमैन सैक्स टाइप सोचते हैं कि वे टू बिग टू फेल, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, खाते रहो पार्टी करते रहो, कल को कोई और जंग हो जाएगी, हमारी जरूरत पड़ेगी, पैसे आ जाएंगे या कोई ना कोई बेल आउट कर देगा. दे डोंट एक्चुअली थिंक के ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है फॉर देम. It's hard for me. I mean, yeah, I mean, I see what you're saying. I don't think it's hyper intelligent in the sense that you may have implied. um I think it's myopically intelligent, yes, in the terms that you're described. क्योंकि पाकिस्तान में किसी ने एक था मुझे एक बात कही which just stuck in my mind. I think it's sort of the right one good way of thinking about the situation कि यार पाकिस्तान में मसला ये कोई नहीं सोचता कि क्रीज पे आके खेलना कैसे है. वो मसला ये क्रीज पे खड़े कैसे रहना है. दैट इज व्हाट यू जस्ट समहाउ स्टे ऑन द क्रीज. आगे क्या कर रही है, बॉलें आपके सर पे मुंह पे पड़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यूर प्लेइंग अगली शॉट्स, वो खैर है कि क्रीज पे तो खड़े हो ना कम से कम. सो उसमें ये है कि दैट इज दैट इन अदर वे ऑफ सेइंग दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म. और उसमें उसमें आई थिंक दीज थिंग्स रियली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. दे बिकम काइंड ऑफ डोमिनेंट ड्राइविंग फैक्टर्स कि अच्छा यार अगले 3 साल के लिए पैसे ईंटने के लिए हम ये वाला जो इशू है ना ये रेस करेंगे कि यार. I mean, even now with all the floods and those are all very genuine things to be talking about, and they're all very real issues. But part of me feels, yeah, are you just trying to find another excuse to get a few extra years of living the way we've been living? You see what I'm trying to say? Yeah, maybe this is the next thing कि हम अब अगर अफगानिस्तान का इशू डाई डाउन हो गया तो अब हम शायद क्लाइमेट चेंज पे पैसे मांगना शुरू हो जाएंगे. उस पे तो हमारा हक बनता है. नहीं नहीं नहीं, हक मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन हक की बात नहीं हो रही है. बात ये हो रही है कि विल दैट बिकम आवर नेक्स्ट एक्सक्यूज टू से कि यार फॉरगिव आवर डेट्स बट वी डोंट चेंज स्ट्रक्चरली. माय इशू इज के वो सारी बातें जेन्युइन हैं, लेकिन आर वी जस्ट गोइंग टू यूज दैट एज अनदर. पहली बातें भी तो जेन्युइन थी ना. वॉर ऑन टेरर वाज अ जेन्युइन, यू कैन से, या जो भी एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं. The point is, we always use those as an excuse to get short-term sort of assistance one way or another, but not focus on the long-term जो हमें चाहिए, जो domestic changes हमें चाहिए वो. That is what I'm trying to say here.
um, but anyways, I think those are legitimate. But अगर किसी में लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती थी, ये लॉन्ग टर्म में तो एज यू नो ये चीज चल नहीं सकती है. इसमें मॉरल आर्ग्यूमेंट तो ये लोग सुनेंगे नहीं, बट अगर हमारी मुल्क की एलीट जो प्रॉब्लली हमारा पॉडकास्ट सुनती है वो सुनेंगी. आपने रिसेंटली काफ़ी इस बारे में बात की है कि एक्सट्रीम इनक्वालिटी जो है उसका तो एक मॉरल आर्ग्यूमेंट है, वो लोग नहीं सुनेंगे, ठीक है ना सुने, बट उसका एक प्रैक्टिकल एम्पेरिकल आर्ग्यूमेंट भी है कि आप आर्ग्यू करते हैं कि एक्सट्रीम इनक्वालिटी हो, और ऑब्वियसली उसमें डिटेल जो है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाती है, बट एक्सट्रीम इनक्वालिटी अगर होगी किसी भी मुल्क में, तो वो मुल्क या वो इकॉनमी या वो सिस्टम वो एक्सट्रीम इनक्वालिटी की होने की वजह से टूट जाएगा. आई लव फॉर यू टू स्पीक अबाउट दैट, कि शायद इसी को सुन के कुछ बेहतर हो जाए हमारी हाँ. लीड. नहीं, मैंने इसीलिए इसीलिए फॉर दिस उसकी जो पाकिस्तानी वर्जन है वो जरा डिफरेंट है, जो आप जिसको रिफर करें, एंड दैट इज मोर वो माय अमेरिकन. जो मेरा रिसर्च वाला काम है वो इट्स मोर लुकिंग एट रिच कंट्री प्रॉब्लम्स, राइट. सो वो उस सेंस में वो आ जाती है. लेकिन उसकी जो पाकिस्तानी वर्जन है वो वही जो मैंने आपको पहले बात की थी कि उस 2 कनाल के प्लॉट का फायदा क्या जहाँ आपके अपने बच्चे नहीं रहेंगे. दैट इज द वे आई वुड फ्रेम द इनइक्वालिटी वाला जो इशू है, बिकॉज वही एक तो सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी इज अनप्रोडक्टिव. अगर वो सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी प्रोडक्टिव होती ना तो वो, एंड आई सी इट, जो again the relative rate of going back to your country for students who are getting professional degrees in colleges and so on that I see all around, almost no one wants to go back to Pakistan, but a lot more people go back to China, a lot more people go back to India, and so on and so forth. So ये वाला जो issue है, it is also important कि at least at some level, even Ford ने भी वो बात की थी ना कि यार गाड़ियां तो मैं प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन आई नीड सफिशिएंट बाइंग पावर इन द मिडिल क्लास कि वो मेरे से खरीदें ताकि मेरा माल तो बिके ना कम से कम. सो देर इज अ लिमिट टू how much inequality and so on a country can sustain. But again, I'll repeat it, कि पाकिस्तान के केस में it's not just the level of inequality, it's about the nature of what is causing that inequality, कि that is also very unproductive. लोगों ने 10,000 सवाल पूछ लिए, आई डोंट नो हाउ मेनी विल गेट थ्रू, बट हमारे दोस्त हैं अली हसनैन, मुझसे आजकल नाराज ही रहते हैं. उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आस्क आतिफ टू प्लीज एक्सप्लेन ट्विन डेफिसिट्स, दैट इज विल द ट्रेड बैलेंस नेसेसरली इंप्रूव इफ वी क्रिएट मोर फिस्कल डिसिप्लिन. um, it's an interesting question. No, necessary जो उन्होंने कहा कि दोनों में 100% जो है कि one leads to the other and so on. Obviously there is a correlation. Let's so I'll have to be technical to fully explain this. It depends on the details of the fiscal deficit. Okay, so let me divide them into two types of fiscal deficits. एक fiscal deficit which is purely expenditure driven, in the sense कि वो it's just financing consumption of one किसी, it depends on the कि आपने किसको distribute किए हैं, पैसे कौन ले रहा है, those are just details. If it's a fiscal deficit that is primarily just financing expenditure, तो उसका तो direct impact पड़ेगा आपकी balance of payment में, because आपकी demand बढ़ रही है and there is nothing to compensate on the supply side which you can sell to the rest of the world. That is the way to think about it. So naturally उसका एक negative impact आपके current account पे भी पड़ेगा because of the trade imbalance that results from it. Because most of the fiscal deficits के अंदर this dimension is predominant, तो ये आपको एक natural correlation जो है वो इन दोनों चीजों में मिलती है. People often talk about the twin deficit problem. So ये एक बात है. Now, but there are scenarios in which you can kind of start to separate those two. और उसकी जो the intuitive way for thinking about it is, again, it depends on the nature of the expenditure on the fiscal side that you are doing. So for example, अगर आपका जो nature of expenditure है, it is in sectors, first of all, जो कि investment driven hai and it's increasing your productivity, and a lot of it, or at least some portion of it, is going to translate into exports as well. So you can start to see कि उसका impact जो है will not be as bad on the external margin, number one. Number two, it also depends on जो जिसको वो पैसा जा रहा है उसकी marginal propensity क्या है to import versus generating domestic demand. So those kind of details start to become more important, that might change the overall correlation between, again, trade deficit on one side and fiscal deficit on the other. But in general, for all these, the first things I mentioned, they do tend to
move together. What levers do countries have to improve their saving rates? अच्छा, जो सेविंग रेट वाला सवाल है ना, ये देयर इज अ बेसिक फंडामेंटल कंफ्यूजन इन पीपल्स माइंड्स व्हेन दे टॉक अबाउट सेविंग्स रेट्स इन जनरल. वो ये है कि जो नेशनल अकाउंट्स होते हैं ना, जो मुल्क के आप अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें देयर इज समथिंग वी कॉल्ड सेविंग. लेकिन उस सेविंग का कोई ताल्लुक नहीं है जो शहजाद यू एंड आई सेविंग वी डू पर्सनली. वो दो फर्क चीजें, लेकिन बिकॉज वी यूज द सेम वर्ड तो वो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है. So it is often said, which is correct, कि Pakistan has very low saving rates and that's a problem. But वो मेरे और आप वाली वो financial savings वाली बात नहीं हो रही है वो. So what is national level पे saving equals investment is an identity. So when people say Pakistan has a low saving rate, what they are equivalently saying is just an identity. It's like the definition of that thing. कि Pakistan has low investment rate. So I would just reframe that question कि असल problem वो है. क्योंकि अगर आप सेविंग की बात करेंगे ना, तो यार अच्छा, लेट्स प्रमोट पीपल टू सेव मोर, लेकिन मसला ये है, इफ by doing that all you're telling them to do is to save more and invest more in plots. So because plot is an existing asset, it does not raise aggregate investment in the country. So आपकी aggregate saving वहीं की वहीं रहेगी, even though people are not trying to save more by buying more plots or whatever, something like that. So that is, I think the more important point here is to understand that saving, forget national saving, just focus on investment because that will make it easier for you to understand the core issue. और पाकिस्तान में जो core, so now to answer that question, the low investment question is basically very much related to जो आपकी और मेरी conversation हुई थी about कि शहजाद की फाइल होनी चाहिए ना कि प्लॉट्स की फाइल होनी चाहिए. Because जब उस वाली when files are on stocks and corporations, तो उससे capital investment generate होगी because that will be real investment. When you start going in that direction through land tax and so on, your investment rate will naturally start to rise. अच्छा, इसमें एक और चीज मैं कहूंगा because that is also very important for a country like Pakistan and also connects to the twin deficit question that was asked earlier. I just want to give one example of how you can raise levels of investment to the public sector as well by creating sources of revenue that will one-to-one translate into investment. Uski ek, just to give you one example is, let's say you do something like a land tax. One thing you can do with the revenue that comes out of it, allocate it only for urban infrastructure. Let's say you create an urban infrastructure bank, और उसके लिए फिर you start working towards alleviating zoning issues and all that. आप say कि okay, you can build high rises, but ये वाला जो area यहाँ पे office buildings होगी, ये subways बनेंगे, ये बनेगा, ये वो. So you do all that planning, all that zoning that goes behind it, and you use that money that you have just generated from land value to actually invest in that infrastructure spending. What you have just done is, एक तो आपने solve कर दी original problem जो आपने मैंने पहले ही discuss कर ली है, but now notice the other thing we have just done. We have now used that revenue to raise infrastructure, which you obviously need, that will now raise the productivity of the people. It will lead to growth. It will lead to, export options and all of that. But now you have raised investment level, the aggregate investment level of the country as well. So I just want to give that as one example to say, yeah, it's a real issue, but you have to, again, think from the ground up of what are the various ways you can now build aggregate investment. So it's not just, so saving ko bhul jaye, wo just the wrong word, actually confuses people. Just focus on investment. आई थिंक चेंज का पिज्जा है जिसके ऊपर सब लड़ रहे हैं, और ये कोई नहीं सोच रहा कि पिज्जा को 12 इंच का करो ताकि कम लड़ाइयाँ हो. somebody is also asking how can Pakistan increase its GDP per capita, but pretty much आपने ये जवाब दे दिया है. In his experience, which productive sectors are the most ripe for public investment? पब्लिक इन्वेस्टमेंट के एक तो अभी मैंने एक एग्जांपल दी है, द इंफ्रास्ट्रक्चर पीस. उसको अगेन उसकी डिटेल्स आर important. Energy is a first order. I mean, forget everything. Energy is number one. There is absolutely no two ways about it. Especially, by the way, when you bring in the climate change angle, when you bring in the water angle, these are all energy intensive kind of things. Many of the solutions are energy intensive. For example, how to make agriculture more resilient. उसके जो technologies हैं, they tend to be more energy intensive and so on. So energy is a no-brainer.
The other infrastructure की मैंने बात की, agriculture की मैंने बात की. The other sector which is very important, I'll just generally define that as sort of the data infrastructure. Um, uske andar, there are just so many, like if you imagine you put all of the education data, health data that you coordinate by building systems around that, uske saath there are so many improvements associated with that. If you can sort of trace and measure कि कहाँ पे education बेहतर है, कहाँ पे नहीं है, where you need to intervene health में to and just using all that information to innovate. There's this science developing where you just use all of the data to make the right interventions, to create the right innovations, and so on. So that is a huge growth area. And it's not an area that requires enormous kind of investment in raw dollar terms. You just need the right kind of policies, coordination, and the right kind of people at the top. So that whole issue of selecting people, empowering them, tell them you design this, you run with it, that sort of thing. That's super important here. तो माझे गामों से ये काम नहीं होएगा. लेकिन, so that's also a very exciting area, I think, where the government can focus on. How do we create quality economists in Pakistan? इसी से रिलेटेड मायरा रफीक बड़ी रो रही थी कि वो सर पे आपसे मिल नहीं सकी, तो वो पूछ रही थी एडवाइस टू द यंग इकोनॉमिस्ट, आई गेस द रिलेटेड क्वालिटी इकोनॉमिस्ट कैसे बनाएं और बन जाएं, तो उनको क्या Yeah, एडवाइस दें? um, I think, obviously I can say broadly a few things on that. It's very, people, let me say the one general remark, the one problem with sort of being an economist is that everyone also thinks that they are an economist, right? And I think it's क्रिकेट important वाला ही to, मसला है. कोई क्रिकेट वाला सब ही मसला है ना, वो मुझे वही कहता है कि कभी बाबर आजम को खड़े हो गया, यार तू खेल ले, या तू आके कर ले, एक बॉल तो जरा खेलो ना. हाँ, अभी तुम सबने जब ट्वीट किया हुआ स्टार्ट. था हैदर अली हैज टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन हिज टेक्निक, एंड आई वाज लाइक मुझे कोई बता दे क्या, मुझे प्लीज जरा बता दे. बट सबको सबको यकीन है कि उनको पता है बैटिंग टेक्निक क्या होती है. Exactly. So असल में the issue is, and hopefully this conversation, इसलिए मैं आपके पहले सवाल का मैंने कहा, no, I don't want to give a solution. Let's understand the problem a bit better, ताकि फिर solution will come out naturally. Um, that is sort of the first thing I'll say, कि यार economics में, if you have to first go through a long process of training. It's a bit like, अगर आपने surgeon बनना है, so there's a long training period. अब उससे पहले नहीं, because there are a lot of nuances involved. It's not that simple. वो बात करते हैं, अच्छा जी आज MMT हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया. इस तरह से नहीं. It's not that straightforward. You have to understand the nature of the problem, and then because everything is conditional, यार ये ground reality है, तो आपने इस तरह से करना है, and so on and so forth. So you need to understand that there are a lot of nuances involved. And so first thing is you have to kind of plan for a PhD, but actually just doing a PhD is not enough. That's just kind of your basic training, I would say. You need then to spend some time on really analyzing those issues. जो भी आपकी niche, आपने sub-specializations आप कहते हैं उसमें जाना है. So first understand कि यार it's a long, you need to make clear कि यार ये कोई, it's not कि मैं ये किताब पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, ये वो किताब पढ़ लूंगा. It's a long process. The other thing is all the usual, read and all that stuff. But in terms of some of the core competencies that you need to become a good economist, okay, you have to um, you have to be good at math in a certain ways. I don't necessarily, sometimes log wo dar jate hain usse, but there are many different ways you can be good in math. So I just don't want to scare people away. But you need to, because there is a certain discipline you need to have to make sure you don't make logical mistakes. When you start adding different markets, for example, कि यार ये वो एक बात कर ली कि अच्छा भाई मैं इस चीज को सब्सिडाइज करूंगा तो ये मार्केट तो बन जाएगी, बट व्हाट अबाउट द फिस्कल बैलेंस, वो बैलेंस में रहेगा कि नहीं. बिला जिस तरह से अभी यूके ने सिली पॉलिटिशियंस ने पॉलिसी की है, दे क्रैश द करेंसी बिकॉज दे डिडंट अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन फिस्कल एंड the currency side in a world of rising inflation and interest rates. So to understand those systems, you have to appeal to math to make sure everything is internally consistent in what you're saying and what you're analyzing. So you just can't run away from it. So anything that has to do with macro level questions, unless you have that level of mathematical rigor, so to speak, you're a bit like throwing darts because you're not sure of whether the argument is
goes through. So I'm just trying to explain why you need a bit of math kind of expertise that helps you become. And the other reason you need math expertise is on the data side, okay, to analyze empirically कि एक चीज का cause and effect क्या है, इस policy का क्या है. Statistics is very important to understand the nature of how do you measure uncertainty. Is this a true effect, or is this the standard error is too large? It could be just guess, it could be just a random chance that has given you this outcome. So वो चीज जरूरी है. So you need to build your technical credentials up front. You need to be aware of the world by reading up on these policy debates and so on. Don't watch talk shows. Read Especially books, Pakistani talk shows. especially Pakistani. This podcast is the only exception. Otherwise, don't watch talk shows. So these are the general things, but you try to do your best. I mean, you mentioned SERP briefly. The reason we tried to create a space like that was because we felt there was no other place in Pakistan that was really promoting research and giving young people a chance to expose themselves to what real world research is like. It's a small effort, obviously. It's a small way in which we, hope some, at least young people in Pakistan, can gain exposure to that. But that level of exposure, I mean, that kind of exposure is also very important. पाकिस्तान में तो हर बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर दो ही रास्ते होते हैं. इज इट ट्रू दैट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमिस्ट उनका बैचलर्स एमआईटी से मैथ और कंप्यूटर में था? हाँ, नहीं, मैं भी तो पाकिस्तान, मैं भी वही आप ही की बात आई कर एम रहा हूँ नॉट मैं. डिफरेंट ना, कि मैं when I grew up, वही दो ऑप्शंस थी. So parents said become a doctor. मैंने कहा ये काम तो मेरे से हो नहीं सकता. So then the only other option was engineer, and I actually liked engineering. I was always interested in math and sciences, so that's what I did. Lekin the good thing about the American education system is that they make you explore other things. And so what I realized was that I was always more interested in some of the social questions, even though I was more of a nerd on the science side. So given what I just told you about economics has that kind of technical quantitative angle as well. So I thought this was a useful combination for I me think to focus on. intersectionality is great because I'm sure you might not say it, so I can say it. You're one of the pioneers in this field of macrofinance. I don't think years ago people were thinking of finance in terms of microfinance. Yeah, I think it's helpful. It's like ignorance is bliss, right? It's helpful when you are coming from the outside, so to speak. And my शुरू में जिस तरह से होता है, you're driven by your place of birth and all that, right? So I was interested in development, to try to see why are things the way they are in Pakistan. So I got trained as a development economist, actually. So Abhijit Banerjee was my advisor, actually. So but then I became more interested in questions of macro and finance. So they were outside of my field. But because I didn't know anything about those fields in terms of my training, I approached them from first principles, which gave me a chance to hopefully do it in a different way. And I think that really helped me on the research side was I wasn't too colored by, that's what I meant by ignorance is bliss, right? I wasn't colored by what the status quo in those fields is necessarily saying or doing. And so hopefully, I could bring a newer or a fresher perspective to those issues. But that's just the reality of life. Sometimes you just get lucky, right? आपने कुछ देख लिया था कि ये आ रहा है, या you just got lucky that 2000, I mean it's not luck that 2008 financial crisis happened, but it's your field. I mean pretty much it happened what you were studying. It's just luck, या आपको कुछ एक अंदाजा था कि ये फटने वाला है? नहीं, वो आफ्टर द फैक्ट तो मैं यही कहूंगा कि मुझे सब कुछ पता था, नजर आ रहा था, लेकिन नहीं, बिग असल शॉट में. आप ही में बनी है आप. हाँ, हाँ, नहीं, आई विश, वरना मैं यहाँ ना बैठा होता, बहुत पैसा होता मेरे पास if this was actually true. नहीं, इस तरह से I was, let me just say it felt very odd what was happening, and so that's why I was curious. So I wasn't when you're trained as an academic, you're just not naturally not in the business of prediction. So you're just not built that way. तो मैं इस तरह से नहीं सोचता था कि क्या होगा, but I was curious कि यार ये it's not, there's something weird going on here. And to put it differently, in a more scientific terms, the traditional hypotheses that we have कि यार
let's say some notion of efficient markets and so on, people expect to be earning more money, that's why they borrow so they can smooth their consumption and so on, like that's sort of the standard, is called the permanent income hypothesis. अमेरिका में जिनके पास पैसे ही नहीं थे वो बोरो कर रहे थे. So, exactly, right? So it was just that common, yeah, okay, let's look at it scientifically because this is weird. It's happening at a massive scale. So we can't have like stupid theories when the reality is something very different. So it was driven by that kind of feeling, yeah, there's something wrong here. But just the nature, I wasn't okay, yeah, that's not, the motivation was that rather than, okay, predicting a crash. What is the single Once most it important? happened, it was like, okay, now this is like really important. Let's focus on that. फिर आप रॉकस्टार थे इकोनॉमी की दुनिया में. What is the single most important question young economists, young Pakistani economists should be asking? Single most important question. Don't ask people like me what to think, what to ask. I think it's really the name of the game is asking new and interesting questions. Obviously, मुझे जो interesting लगता है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ या उसके ऊपर पेपर लिखने की कोशिश करता हूँ. So you can read that and you can sort of figure out for yourself if that's interesting for you or not. But I think the most important sort of characteristic to have to be successful in academia or in life in general, perhaps, is to know to be able to ask the right questions or the important questions. So उस sense में this is why again this time हमारी podcast भी शुरू हुई थी, I kept saying यार ये Socratic method जो है उसके ऊपर focus करती है. I think that's a very useful discipline to try. यार अच्छा ये क्यों है, to go as lower a level as possible in understanding the issues and then working backwards, by asking questions and then saying, okay, what is the natural implication of the answers that I get? That it's more that habit of questioning life that way. Again, Socrates ne kaha tha na, life Unexamined life is not worth living. Right? So in that sense, you must learn to examine your own life, your society. I mean, it's very unfortunate that Pakistan mein, we don't not just encourage, but in important ways, we discourage questioning. Right? ये सवाल तो तुम कर ही नहीं सकते हो. I just try to get out of it as much as possible, and then but at the same time, just questioning something doesn't mean कि यार जो मर्जी मुंह में आए बोल दो. I don't mean to say that. Be serious about it. Be scientific about it. Be honest about it. How to increase class mobility in Pakistan? Land tax is one. Again, it's all related to that. I mean, I think this class mobility. I mean, if you look at, and this again goes back to these issues of, if you look at the ratio of land property value to, like, in professional class, what might be your starting salary, there's no way you can imagine getting ek banda, if you're not lucky enough कि आपके parents ने आपको दे दिया है, like how do you get into these buy a place that you really deserve in terms of आपके जो professional credentials हैं. So I think it's issues like that, and again we've talked about like the whole unproductive elite issue, these issues, they're all embedded in it. So they're all related to social mobility. And unfortunately, we don't talk about it. Unfortunately, we don't talk about it as an economic problem, right? We don't talk about it in terms of, yeah, we need to change the growth process to make it more inclusive, to make it more even, and then think about what policies need to be undertaken to move in that direction. We've mentioned some, but obviously you can think a lot more on these issues. That's super important. It's actually very, like, what does it mean to be a Pakistani? What's the national identity? And I think part of this is related to that, because we have defined identity sometimes in terms that it's exclusion of others, and we have tried to define identity it's just left to upper middle class. That is the identity, and but there's all these masses who are living very different lives. I mean, I once went to northern areas and I just happened to go to the people, किसी ने बुला लिया अपने घर के अंदर, to actually see the conditions they were living in. हम अपनी बड़ी जीपों में जाके वहां सैर करके वापस, it's a totally different world. It's a very different exposure to Pakistan. कि यार, वो बिल्कुल वो
क्या उसे कहते हैं, they don't even have a mattress, right? वो कालीन बिछा के उसके ऊपर सो रहे हैं and things like that. I mean, the level of poverty was just incredible, right next to places like Serena and all, right? And um, so I think we really have to make the definition of what it means to be a Pakistani inclusive in that sense. कि यार, we care कि anyone who is born in this country has, that notion, equal opportunity वाला has an equal shot. तो कभी भी नहीं होगी. We understand that, but यार कुछ तो होना. At least start building that statistic कि यार वो कितना को ऊपर जा सकता है, opportunities क्या हैं. At least start measuring it. क्योंकि यार ये हमारा, अगर आपका aspiration है तो at least start measuring it. आप वो तो measure ही नहीं है पाकिस्तान में actually available if you wanted to measure it. Unfortunately, hundreds of thousands of people are still in bonded labor in Pakistan. I think जब हम दुनिया भर की बात करते हैं या इकोनॉमिक डिबेट्स करते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है. बॉन्डेड लेबर तो खत्म कर दो, फिर मे बी वी कैन टॉक अबाउट बिगर अपॉर्चुनिटीज. हम पाकिस्तान का टैक्स बेस इंक्रीज करने में क्यों फेल हो चुके हैं या फेल होते रहते हैं? पता नहीं. It's such a simple problem. I mean, इनकॉम्पिटेंस. नहीं, इसमें तो इस सच सिंपल प्रॉब्लम कि पता नहीं इनकॉम्पिटेंस. बिकॉज थिंक अबाउट ये जो मुझे तो समझ नहीं ये जो करते हैं एमनेस्टी स्कीम्स. आई डोंट नो हु कम्स अप विद दीज आइडियाज. व्हाई? हॉट मनी. मतलब यू वांट टू टैक्स पीपल, टैक्स देम भाई. इसमें इतनी रॉकेट साइंस क्या है? यू नो हाउ टू डू इट. मतलब I really, it's a pure. It's not just incompetence. Obviously, there are now entrenched. The system fights you back, right? I mean, I think that's important. So I don't want to. It's a serious issue. People have done research on that. Here, how do you, okay, the system itself is incentivized, for example. Okay, they help the government. Now, आज कहने tax collector ने आपकी बात तो नहीं मान ली ना वो, he will try to fight you. So there are real issues like that. But I think ultimately amnesty तो top पे decide होती है ना. So there is a real issue at the top. And I can't go in their heads. I really hate doubting people's intentions. पाकिस्तान में तो आदत बन गई है ना कि वो कुछ और कर. Maybe it is that, I don't know. But I think Pakistan can easily do much better if they really wanted to. But it's just boggles my mind. कि यार ये क्या कर रहे हो? I mean, so much taxation in the world happens local government level पे. यहाँ पे local government ही नहीं है. And इसमें, और obviously मैं clean sheet नहीं दे रहा, but मसले होते हैं. आज ही की खबर है कि कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर है मुर्तज़ा वहाब ही resigned because judiciary decided कि नहीं, आप municipal tax नहीं लगा सकते. I mean, आप, yes, उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, बट आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर तो करें ताकि वो कुछ डिलीवर कर सकें. Ask him why he prefers empirical work to the conventional DSGE modeling paradigm in macroeconomics. मेरे तो सर के ऊपर से सवाल गुजर गया, आप बता दें. मेरे भी, क्योंकि डीएसजी मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है. मुझे तो समझ नहीं आती उसकी वैल्यू क्या है. आई डोंट अंडरस्टैंड. इट्स अ डीपर सॉर्ट ऑफ टेक्निकल, आई गेस, क्वेश्चन ऑफ टेस्ट. बट आई आई डोंट सी द point of it. Basically, DSGE work, in my mind, it suffers a lot from what is called the misspecification problem, which is कि उसका आपको एक result तो मिल जाता है. It will tell you, for example, it will tell you, for example, अगर आपने tax rate को double कर दिया तो उसका economic impact क्या होगा. It will give you an answer, but you don't know whether to trust that answer or whether the way you model the impact of taxes on the economy, that model is misspecified. So at certain level, at the end of the day, you're never sure कि आप number को seriously लें या model को seriously लें. And so I've never been able to resolve that in my head, and so I've never gone in that direction. Would you agree that state-led development of local manufacturing giants through export discipline, such as in South Korea, Taiwan, Japan, China, is the only successful model for developing Asian countries to follow to become developed? नहीं, only तो उस तरह से, there are 20 different paths that you can take. The I think the way I would frame this question, it's a very legitimate question, is again going back to what partly we discussed with reference to industrial policy, which is क्या role क्या है of state and of the private sector, and how do you make it work? How do you coordinate that state versus market? So that question of state versus the markets is a first order question. That's a very important question. And anyone who gives you extremes on that answers doesn't know what they are talking about, right? So agar aap ye कहेंगे state everything should be private, that's absolute nonsense.
state has a very important role to play in terms of setting rules of the game, in terms of coordinating on जो भी हम बात करें, just take the land tax example, right? The state has to intervene to say यार कि this thing is more productive than that thing is unproductive. So you penalize the unproductive piece, right? State has to get involved in that. There's very important issues. There's this one way of understanding the fundamental tension is the following. Markets call it capitalism. It always says, ownership is good, private, and that's true. Invisible hand, that very much is an important force. But the same science that tells you that also tells you that if you make private ownership a monopoly, that's going to be terrible. So you have to fight that battle. Yes, have private ownership, but not monopolies. And to fight that battle, you now need a functioning government that can maintain that balance. And it's a continuous struggle, obviously. It's not that I have fixed kar diya, now I can go back and sleep. So I'm just giving you one example of how to think about that balance between the private sector side or the market side and the government side. And you always need a balance. And we have, again, there are many different ways one can give examples. I just gave you one, but it has to be the right balance of those two forces that makes a country grow. If you just come up with extreme answers, complete socialism or whatever, free market, it's all nonsense. We know that. आई थिंक थोड़ी हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, कुछ लोगों की फैसिनेशन है विद न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, तो वो प्राइवेटाइजेशन प्रीच करते रहते हैं फॉर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एंड वी हैव डन दैट एंड इट हैज नॉट वर्कड. Yeah, no, exactly. There's another way to answer that question, which is, when I was giving these comparisons, you can also say, private sector ke kya comparison hai with private sector in other countries. So that lack of innovation, that lack of productivity growth, you see that within, whether it's textile or others, or lack of new industries that get developed, you see that lack of innovation in the private sector as well. And so the reasons for that have to be with the environment that these companies are operating in, right? So and the environment has to do with the government, the environment has to do with sort of the public sector and so on. So you cannot think about, again, it's about easy fixes, right? Because it's very easy to privatize, but it's not going to solve the core issue. For example, just because you mentioned privatization, if you compare Pakistan and India, they both liberalized in the early 90s, and Pakistan actually liberalized more aggressively than India. But obviously, India did much better than Pakistan because other problems were much deeper in Pakistan than in India. So that's why just solutions. You really have to, if someone only gives you solutions, question them. They need to give you a lot more than, okay, here are the conditions, and this is exactly why this solution will work, and it solves sort of the major dimensions of the original problem as I see it. Demand a bit more from them before believing the answer or the solution. Since आपने इंडिया का जिक्र किया, आप 92 को डाइवर्जन पॉइंट समझते हैं, आप कहते हैं कि 92 के बाद से इंडिया और पाकिस्तान एक डाइवर्जन पाथ पे चले गए, ऑब्वियसली वो हमसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर निकल गए. तो ये क्यों हुआ, और बी कुछ लेसन्स हैं डिस्पाइट मोदीज कल्चरल पॉलिसीज एंड ऑब्वियसली फैशिज्म और वो इश्यूज अगर साइड पे रखें, कुछ उनके पास्ट में इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिनसे हम सीख के शायद कुछ बेहतर कर सकते हैं. Yeah, I mean, एक तो they, relative to Pakistan, they focused more on building domestic capacity. But they may have been sort of misguided in terms of how it was done. But even if you see before 1990s, like, गाड़ियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो IITs का network spread कर रहे हैं, the push that Nehru brought in and so on. You don't see the same sort of development of broader capacity, domestic capacity, which may be under or misutilized for some years because of lack of whatever license Raj and so on, things like that, were hindering the true potential uski realization ke liye. Lekin Pakistan mein you don't see that relatively broader based level of investment and domestic capacity building. So that's one reason. I think the other reason is, of course, that Pakistan went in the direction of
exclusionary politics and sort of extremism much earlier than, India में तो अभी recent है ना, we'll see जी क्या बनता है इसका, मोदी का क्या, so लेकिन Pakistan and India really benefited early on from the, again, sort of नॉन uh, अलाइंड. non-aligned, and sort of the secular constitution, and it actually had much better potential in my mind, um, than what the new potential of India is with Modi at the helm, because I think that it really damages India's potential. It could have been a more open, accepting society and a successful one, which could have, increased its potential relative to what it might be able to do now. And again, as I said, we'll see about that, because unke liye it's a recent transition to, to a more exclusionary kind of authoritarian politics. But Pakistan went in that direction much earlier. And again, this is partly why, going back to our earlier conversations, when I was saying, yeah, it's not just about taking power away from establishment, military, and so on. It's about also understanding what the politicians do with that power. And some of those decisions that they made were not helpful. And now you're seeing it in India. Power went to the Modi government, and I think some of the decisions that they have taken are not going to be good for India in the long run. Hopefully institution strengthening is the way. The Trump being Trump, at least वहाँ judiciary, कोर्ट्स, मीडिया, इंस्टीट्यूशन इतने सालों साल स्ट्रेंथन हो चुके हैं, डेमोक्रेसी इतनी इंट्रेंच हो चुकी है दैट इवन इन इंडिया विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट, सीएए प्रोटेस्ट, मोदी चाहे जो भी करना, बाकी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हैं कि उनको भी वो पुशबैक आता है. व्हाट आर द टॉप 3 स्टेप्स टू बी टेकन टू पुट अस ऑन द पाथ टू सस्टेनेबल रिकवरी? And top three, so I'm not good at those questions. लेकिन in terms of prioritization की जो मैंने बात की थी, I'll again say कि इस वक्त the necessary, it's not sufficient because there are other issues involved, but the necessary thing that you have to prioritize as number one is solving the balance of payment issue. That's number one. Like, forget everything else. If you don't solve that, the chronic piece of it, मैं आज की बात नहीं कर रहा कि आज एक साल गुजार लो आप किसी तरह से, and उसको solve करने के लिए, so if you put that, that's very clear. So now the question is, how do you do that? और उसमें the next thing that is very obvious to me is कि Pakistan, in a way, it must design a path to get to a position of running modest current account surpluses. Now, that's a very different mind frame than the one that we currently have, or even the one that IMF has in its projections. So I actually don't like those projections. If you take those projections as our sort of aspirational point in 5 years and so on, I actually don't like that. The reason for that is that Pakistan has performed so poorly in terms of balance of payment problems that it must now fully insure itself against the need to go back to international markets for a few years. You build that credibility, and that's how China and East Asian countries early on did it as well. And so that's the next thing. And when you ask yourself, what do you need to do for that? You get back to what we discussed, which is you need to do things like land tax, and you need to focus on an energy policy. So I think it's like that would be sort of on my kind of first things of list to do is कि सबसे पहले आप external को अपने, ताकि आपके पास sovereignty तो आए ना, तो space मिले domestically to do what you need to do. अभी तो यही है, you are looking always over your shoulder कि यार ये currency ना crash कर जाए, that's guiding your monetary policy, that's very much constraining your other decisions. So सबसे पहले you have to bring that independence back, and then you can take other actions. प्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप करना तो शायद थोड़ा लॉन्ग टर्म साउंड कर रहा है. शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में हम कुछ कर सकते हैं टू गेट डॉलर्स? गेट डॉलर्स तो भूल जाए ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि करंट अकाउंट फिर वही बात करें टू गेट डॉलर्स. कुछ ओनली फैंस So खोल लूं okay, मैं so अपना. that's a good question. So let me just say one thing, which I think is, let's talk about some pain that is needed actually to get this. It's a good question. डॉलर्स नहीं है यार आपके पास, लेके आप क्या करोगे उसके साथ? वही करोगे जो पिछले साल किया था. We've talked about Pakistan's low investment rate, which needs to be raised. But another way of thinking about this is that Pakistan actually is not, so this is going to sound maybe demoralizing, but Pakistan is not as rich as it feels. Even though it's not rich, we know, but even now,
So Pakistan's level of consumption should actually be lower than what it currently is. And in fact, that's the only way you can raise investment, because there is consumption, there is investment, and then there is your total income. And because we have been borrowing from the outside world, our consumption is higher than what it should be given our income. And number two, it's actually still much higher because our investment piece is very small. So if I first take out the external net inflows and then I say we have to raise our investment level, that is two reasons why our consumption must fall actually. So we must compress. Now, consumption, when I say compress, obviously I'm not talking about the lower middle class. Oh, bichare to pehli malnourished and so on. So that's not what I mean, right? So that means tightening the belt at the top. And that is where, so again, it goes back to land tax. It goes back to inheritance tax and thinking of things of that nature. Okay, we have, there are segments of the society who are consuming a lot, but they really are not earning enough. Certainly not productively, and again, in the way that. So, us sense mein, there will have to be consumption compression, raising of investment in the short run, balancing the external account by doing that. And now you set yourself on a path where you have higher investment, your external account is in balance, your consumption is lower proportionately, but now you're growing faster. So your overall consumption will become much higher than what it is today. But those are the short-term measures that you must do to rebalance yourself, and then you can grow at a faster pace. And you'll all be better off. That's going, ultimately, you'll all be better off if you're able to do that. Since we're not doing any of those things, जो हमारे यहाँ debates होती रहती हैं रोज की डॉलर रेट पर, पेट्रोल प्राइस पर, they're all superficial, right? Yeah. I mean, they're all superficial, but sometimes they're more very important. Like, I've criticized in public, like, what the previous PTI government did towards the end of its tenure by subsidizing oil. I mean, that was just very I bad. mean, now तो they're on record admitting कि हमने nuclear bomb जानबूझ के लगाया था economy पे. No, I mean, so that's now another conversation. When you go to that level, then I go back where I say, political parties, you talk about that, you can't, and they are not the first ones, by the way. I've been on record saying that. So just to be fair, previous governments have done similar things just before they are going out of power. Musharraf government did that. Importantly, Nawaz government did that in a different ways. That was the exchange rate policy and so on. I mean, they tried reversing it before going. At least Miftah had replaced that. So at least औरों के लिए तो बर्बाद नहीं किया. नहीं, I remember Miftah had those started things. The recovery, नहीं? Miftah had started reversing Dar. Yes, but वो was not out of any good intention. The markets forced it. So that was the reason they were forced to do it. It's not that they just policy decision नहीं था वो. But that is, so again, this is why, going back to our earlier conversation कि मैं जो शुरू में बात कर रहा था, वो इस वजह से जब when you look at all these reasons, if you had political maturity, but maybe it's too much to ask. So maybe, I know आप जिस तरह competency की बात कर रहे थे, तो मैं argue कर रहा था. I mean, is Shaukat Tareen competent? Is Taimur Jhagra competent? Their credentials would say so. लेकिन जब they're trying actively to sabotage the IMF deal and they're on the record saying कि भले पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, आप political party का सोचें. एक वक्त जहाँ 1/3 of the country is underwater and you're actively trying to stop IMF money coming in, increasing the chances of Pakistan defaulting, तो फिर हम आपके credentials और competency कहाँ देखें? मतलब आपने जो किया है वो देखना चाहिए ना हमें. उसका तो competence से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना. That is just pure malpractice, right? I mean, and I'm using a very light word. I mean, I think you can use. I mean, that was extremely disappointing. Call it whatever, lack of maturity, wisdom, whatever name you want to use it. But at the end of the day, अगर आप, it's true for any society. यार कुछ तो norms होनी चाहिए, कुछ तो values होनी चाहिए. I understand strategy and tactics and gamesmanship and politics and all that. But the reality is, Shahzad, के अगर आप
एट मिनिमम लेवल ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज सोसाइटी में आप नहीं रखते हैं और अपने पॉलिटिशियंस को आप होल्ड अप नहीं, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर देम, फॉर अगेन गोइंग बैक टू मैं, so because we so there is no way forward, and I think at एक realization होनी चाहिए, because we've seen the पिछले 30-40 सालों से you've been trying things a certain way. um, we haven't really talked about it. Time तो हमारा खत्म हो गया, but given the situation that I've just described, एक और चीज जो है कि the trajectory that we are on, हमने decide कर लिया ना trajectory के, अगर हम नहीं change करते. But another implication of that is that the kind of changes we need, like for example, empowering women and incorporating them into the workforce, opening up the society के यार वो जो श्रीलंकन के साथ किया था, 4 लोग आते हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक के साथ क्या हुआ, you know, that's a reality. I mean, I know those realities a lot more than the average Pakistan, but those are realities. आप कह लो यार नहीं सॉल्व करना, आप उसको एक पॉलिटिकल बना लो, अगले इलेक्शन में फिर आप उन इश्यूज पे शुरू हो जाओ पॉलिटिक्स करना. दैट इज योर चॉइस. वो हम सबको पता है कि दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, एटलीस्ट ऑब्वियसली वो दे ट्राई टू फूल पीपल, बट आप यू कैन कंटिन्यू टू गो इन दैट डायरेक्शन. दैट इज अ चॉइस दैट यू हैव, बट डोंट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स इन द एग्रीगेट, बिकॉज up jab tak we talk about competent people, bringing managers, delegating them, what the constraint you're facing right now is that if a woman is smart enough, if a man is smart enough and competent enough, it's not that they are limited to Lahore, Karachi, Islamabad. They can go to other capitals of the world, other major cities of the world, and they can equally work there. That's your competition. So you have to ask yourself, as you do these stupidities on the side, on the political side to win votes, here with this narrative, with these set of values, can we really bring in the set of individuals we need to build that energy sector that we are talking about, to build those universities that is going to teach the next generation of Pakistanis and so on? And if the answer is you can't, तो फिर ये याद रखें कि उस 2 कनाल के प्लॉट का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उधर आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे. Nature will teach you I know. ultimately, and that's the current situation that we are in. I know we've taken too much of your time. जाते जाते अगर सिंस हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, अगर हम होप करें कि सारे एक टेबल पे बैठ जाएं और बोले जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, एक इकोनॉमिक चार्टर बना लें दैट वी ऑल एग्री ऑन, जो आप बेस लाइन की बात कर रहे हैं, व्हाट डज दैट लुक लाइक? It looked like, I'll be repeating myself, right? It looks like the set of things that we talked about. I really hope that they do that, by the way. I think, one thing that we did not, because Pakistan, when so many things are broken, one problem with Pakistan right now is that sometimes when it's just कि यार एक चीज fix कर दो, and it's not just one thing. It's a few things. So you need coordination actually, right? And that's one reason why मैं ये नहीं कहता यार इसको गाली, because जब आप टेबल पे बैठेंगे ना, आपको you will hate them, but you will have to sit with them. जब आप and so that is why मैं कहता हूँ कि I respect all political parties. I respect all in that sense कि यार you need them to move forward. Yes, each issue we can criticize each actions and decisions. लेकिन एक certain level of, despite everything, you must maintain a certain level of respect, so you can come and sit on the table and say, okay, let's be a little bit more mature about this, because it's about the collective. It's not about, जो भी personal dislikes होंगे, you may not like me, you may not like one finance minister or the other, and they've all done kind of silly things in the past. But when you're looking forward, you have to have some goodwill for each other, that you do sit on the table and you say, okay, this is the common set of things. We really need to have that conversation. But when you have that, I'll say, maybe this is the last thing I'll say. As an economist, you understand that when a system, it's not the system is broken, it's in a bad equilibrium. Nothing is broken. Everything is, it's stable. Pakistan can go, like we already talked about. Pakistan has gone on for the last 30 years. चल ही रहा था ना. एक और 30 years भी चलेगा. वो चलेगा किस तरह से? We've just gone through that. But when things are stable in that bad way, that has a natural Socratic implication. If you question yourself, if it's bad in that fundamental way, it means कि यार अगर कोई चीज बहुत आसान होती change करनी, और वो आपके, the usual
फ्लिप्स ऑफ स्विचेस से अगर वो हो जाती तो अब तक उसने हो जाना था। मिलिट्री रूल भी आ चुका है, इनको भी चांस मिल चुके हैं सारी पार्टीज को, एंड सो ऑन। थिंग्स आर अ लॉट मोर, दे विल, यू विल नीड, दिस इज, मैंने शुरू में जो बात की थी, विजन तो हो गया, चार्टर, उसके हम्म। साथ एक करेज भी चाहिए होगी। यू विल नीड टू टेक सर्टेन डिसीजंस, जो जब आप लेंगे तो पीपल विल क्वेश्चन यू, और दूसरे, दे विल ऑलवेज बी सम पार्टी ऑन द साइड, वो खुद ही नहीं बन जाएगी अगर वो आज नहीं भी एग्जिस्ट करती तो, जो कि आपको फाइट करेगी ऑन द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट यू आर ट्राइंग टू मेक। सो उसके लिए आपको थोड़ी सी करेज भी चाहिए होगी। करेज तो हमारा कावर्डली डॉग है पाकिस्तान में। बुक रिकमेंडेशंस पर एंड करते हैं सर, वो जो लॉट ऑफ पीपल आस्क फॉर बुक रिकमेंडेशंस फ्रॉम यू, बुक रिकमेंडेशंस, ओके। स्पेशली बुक्स दैट शेप्ड योर ओवरआर्चिंग आउटलुक ऑन इकोनॉमिक्स। Not उस sense में नहीं, because and partly because I don't think, I think if you find a single book swaying you too much, then probably you haven't read enough because nobody, हर कोई, so I think उस एंड sense में अनफॉर्चुनेटली द बुक दैट स्वेज अस इज कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। जब वो मुझे कोई कोट करता है मैं उठ के चला जाता हूँ उस कमरे से। हाँ हाँ, it's all, I would say वो भी ठीक है, like read everything, they all have kernel आई of मीन truths in एज them. एज फिक्शन पढ़ ले, आप इंजॉय कर ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन बट बाइबल there ना are, बना ले उसको। there are things, so read widely economics books, because we talked a lot about land tax. Let me recommend one book जो उसका, it's really nice actually, it's called Radical Markets, ग्लेन वाइल एंड पोजनर के ऊपर है, and it's about mechanism design, and how, um, it's you can, you can criticize that book by saying कि ये बहुत किताबी बातें कर रहे हैं, but what I like about it, feasible नहीं है thing, but what I like about it is it's giving you some new ideas of how to think about out of the box kind of a thing. And so for example, land tax is one of the ideas that they push. है तो ये पुराना idea, Henry George, and earlier have said this many times, um, but that's an interesting book, to read, um, I think, अभी recent book है by Abhijit Banerjee and Esther Duflo. I was just reading that. I think that's a nice book, as well. But yeah, there are many others, obviously. थैंक यू सो मच सर। 9,099 सवाल रह गए हैं, तो होपफुली हम आपको बाद में तंग करेंगे। आपने टीजर देख कर के हमने हिस्टोरिकली इकोनॉमिक हमारी परफॉर्मेंसेज और गवर्नमेंट्स नहीं डिस्कस किए, मुझे ज़्यादा एक्साइट कर दिया। दैट आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन सिटिंग डाउन विद यू एंड डिस्कसिंग कि हिस्ट्री में हमने इकोनॉमिक कहाँ कहाँ किए हैं, कोई मसले किए हैं। बिकॉज मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हिस्ट्री है, मैं सारे दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, एंड दैट्स व्हाट माय मास्टर्स थीसिस इज आल्सो इन थिएटर हिस्ट्री। तो आई वुड लव दैट, प्लीज़ सर फिर से टाइम दे दीजिएगा। एंड अगर लोग डिस्करेज हो रहे हैं, नेवर काउंट पाकिस्तान आउट। डू यू रिमेंबर हाउ वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्जेशन सर? हाँ, क्या है स्कोर, क्या है? इंग्लैंड नीड 41 runs in 20 balls with only 4 wickets remaining। तो मैं आपका और टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज एंड देखें जाकर पाकिस्तान, नॉट टू जिंक्स इट, Never लुक्स know, लाइक never विल give विन up. दिस। तो आप कभी हमें काउंट आउट ना करें, वी माइट लुक डाउन एंड आउट। इवन 100 for 6 पे हम लोग बहुत ही डिस्करेज थे, बट होपफुली फ्रॉम हियर There you पाकिस्तान go. विल विन। तो होपफुली 1 minute डाउन 1 minute अप, जिस तरह हमारी क्रिकेट है, हमारी इकोनॉमी भी होगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। Thank you, Shazad.